नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू invideogames यूट्यूब चैनल। आज की जो गेम है उसका नाम है साउथ ऑफ द सर्कल। ये कहानी है पीटर और क्लारा की। दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन फंस जाते हैं एक ऐसे सिनारियो में जहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राजकीय बवाल चल रहा है। कहानी में क्या टर्न आता है, कैसा टर्न आता है, वो अब हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत गेम है, जैसा कि मैंने पोस्टर्स में देखा हुआ है। अभी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि दो लोग यहाँ पर प्लेन लिए हुए हैं और फंस चुका है उनका प्लेन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे थे स्क्रीन पे। पैनिक करना था, हमें कंफ्यूज रहना था। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि चॉइसेस मैटर्स करती हैं। Hey, come on, wake up, wake up. Thank God you're all right. God, my leg is jammed. एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और उस क्रैश होने के कारण इन दोनों लोगों के पैर जो हैं वो फंस चुके हैं। दोनों के नहीं, हमारे जो ब्लू वाले शख्स हैं उनके। Here, let me help. जो लोकेशन है वो है अंटार्कटिका। जो समय है वो है 1964। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। हम डेफिनेटली थोड़ा सा कैरिंग अप्रोच के साथ जाएंगे, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे। यहाँ पे दो अप्रोच के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको हड़बड़ाहट का भी करना है कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा शाउट आउट कर रहे हैं कि नहीं ये क्या हो गया, अब तो अब चांस है नहीं। थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट अपना रहे हैं, बट अभी के लिए मेरा जो अप्रोच है वो पॉजिटिव रख रहे हैं हम लोग। गेम के ग्राफिक्स बाकी सारी गेम से काफ़ी अलग हैं। इस तरह के ग्राफिक्स को पॉली ग्राफिक्स कहा जाता है। और एक बात और बता दूं, हर बार पॉजिटिव माइंडसेट रखना भी कई बार सही नहीं होता है। कई बार आपको अग्रेशन दिखाना पड़ता है। और ये रेड मतलब सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट नहीं है। आप देखिए यहाँ पर तो नेगेटिव माइंडसेट ही आ रहा है। तो रेड मतलब नेगेटिव माइंडसेट ही नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी है, थोड़ा सा गुस्सा है। रेडियो से कांटेक्ट कर रहे हैं। Mayday, this is Alpha Romeo Lima. Crashed south of Deception. Coordinates roughly 82 south, 19 west. Come on. Hello Faraday, do you read? अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और आप ऐसे भी दुनिया के ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ पे आई थिंक इस समय आप ही अकेले हैं। मतलब ये दोनों ही अकेले हैं। अब दो हैं तो अकेले तो नहीं हैं बट फिर भी ये दोनों ही हैं। मतलब well, that's your lot. Puts paid to flying out of here. I'm good for nothing like this. And the plane's in no fit state either. हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो प्लेन को हम ख़राब कह सकते थे या तो फिर वेदर को ख़राब कह सकते थे। मैंने प्लेन का दोष दिखाया है यहाँ पे। एक लाइट तो दिख रही है। We were about to fly over one of the British outposts, Deception Point. That should be it there. Maybe they got a doctor. Yeah, I think I can see it. So can you make it? Make it? It's freezing out there. Well, you'd rather stay in this. वो जो रेड लाइट चल रही है ना, वो ब्रिटिश पॉइंट है। We could wait. वहीं पहुंचने का प्लान था। Mate, your fairy godmother's not going to magically appear. Nobody knows we're here. रास्ता कुछ है नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। अब एक जन कह रहे हैं कि भाई पॉसिबल है ही नहीं, और एक जन बोल रहे हैं कि भाई और कोई रास्ता भी नहीं है। कह रहे हैं अब मर्द बनने का वक्त आया है। ठीक है, फोर्थ राइट, असर्टिव, स्ट्रॉन्ग। How far away do you think it is? It could be 5, 10 miles. Can you make it? We don't really have a choice, do we? Yeah. Good man. How will I find my way back? There might be something here. I'll keep a box for emergencies. I think this qualifies. Flares. जो काम की चीजें हैं वो ले ली गई हैं। This window and send one up on the hour. Help you get your bearings. Hey, you here?
I'm here. I'm here. ठंडी इतनी है ना कि कॉन्स्टेंट कहते हैं ना कॉन्शियसनेस वो खत्म हो जा रही है इन लोगों की. I'll be back as soon as I can. You just mind that leg. Yeah, thanks. Hey, you watch out, okay? It's 10 below zero. हो -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ पे. अगर आप कंट्रोल की बात करते हैं तो गेम में ज़्यादा कंट्रोल नहीं है. आप ऐसा समझिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं जिसमें आपका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा और उससे गेम की स्टोरी बदल सकती है. ठीक है, ये जनाब हमारे बाहर तो निकल गए हैं. अब आगे क्या होगा देखिए. अब आई थिंक कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा. अभी मेरे हाथ में कुछ मैनेजमेंट नहीं है. अपने आप ही मूवमेंट है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है. हाँ नहीं 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 ठीक है. ओके, एक्चुअली ये निकलते ही गलत दिशा में जाने लगे थे. मैंने इनकी दिशा बदली है. अब हम लोग उस रेड जो लाइट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट बढ़ नहीं पा रहे हैं. आई थिंक इतनी हवा है ना, कितना भी दम लगा दूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बल्कि अपोजिट दिशा में बढ़ पा रहा हूँ. मैं छोड़ दे रहा हूँ ना कंट्रोल, तो ये अपने आप ही दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं. नहीं 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 नहीं, उस दिशा में बढ़ना तो ऑलमोस्ट समझो इम्पॉसिबल ही हो गया है. हकीकत में हमें जाना उसी दिशा में है, तो ये तो काफ़ी कंफ्यूजन है. ठीक है, मैंने इनको छोड़ दिया. आई थिंक इनको अपने हिसाब से जान देना. बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग. ना ही मैं ऊपर से मैं ये गेम कंट्रोलर में खेल रहा हूँ, इसके बावजूद भी मैं मूव नहीं करा पा रहा हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा टेंस मोमेंट बन गया है. ओके, फाइनली चलना शुरू कर दिया है. ओके, फाइनली थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है गेम. मुझे एक समय लगा था शायद बढ़ ही नहीं सकते उस दिशा में. अभी दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे हम जहाँ बढ़ रहे हैं ना, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली हम कहाँ बढ़ रहे हैं. हम कहाँ बढ़ रहे हैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम. बस ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने बढ़ रहे हैं जिस दिशा में लाइट है बस. ओह ओके 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 ओके, फाइनली हल्का फुल्का मुझे कुछ एक टावर जैसा हिस्सा दिखाई दिया है, और दूर से लग रहा था कि बहुत दूर है. भला है कि मैंने कोशिश की यहाँ पे चलने की. नहीं तो ठीक है, मैं ही स्क्रीन से गायब हो गया हूँ. और ये क्या हुआ, ये गेम को, हाँ यहाँ पर तो पूरा माहौल ही बदल गया. मतलब इस वक्त मैं एक हरी भरी जगह में आ चुका हूँ और अच्छा खासा मौसम हो गया है. प्लेयर मूवमेंट काफ़ी वियर्ड है इस गेम का. जो मैंने फील किया है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है इस गेम का कंट्रोल. बल्कि कीबोर्ड पे ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू कंट्रोलर. ये हम एक्चुअली कीबोर्ड पे चला रहे हैं. अभी इससे पहले मैं कंट्रोलर से चला रहा था, और थोड़ा तो तिरछा जा ही रहे हैं. ये इशू तो है ही. एक लेडी हैं जो अभी अभी ट्रेन में सवार हुई हैं. ओके. Oh, here, let me help. Oh, I think I can manage. No, honestly, it's fine. Oh. Not as easy as it looks. Oh dear. Let me give you a hand. Oh, no, no, no. I can do it. It's easier with both of us, don't you think? All right. On 3. 1, 2, 3. That's my fault. There's too many books. अभी तक नाम what's in किसी के here. बताए नहीं गए हैं. इन दोनों कैरेक्टर्स के नाम अभी स्क्रीन पे आए नहीं. आई थिंक अब इंट्रोडक्शन जब होगा there you go. तब आई थिंक Teamwork. पॉसिबिलिटी होगी कि I could have managed. I'm sure, yes. Thank you. Right. I'll leave you to it. Oh, do you join me?
Well, I don't think you'd have much luck finding another free carriage. All right, thank you. ठीक है, दोनों लोगों ने डिसाइड किया है, दोनों लोगों ने नहीं, आई थिंक लेडी जो थी उन्होंने डिसाइड किया है कि आप अगर मुझे इस जर्नी में साथ दोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे भी कोई है नहीं कंपार्टमेंट में तो। Your work? My students. They haven't learned the art of editing just yet. Still, someone's got to mark it. जो लेडी हैं जो बता रही हैं उस हिसाब से आई थिंक वो एक टीचर हैं। You're marking all of that? I'm trying to. I can't complain. When I was a student, my professor said to me, "You don't expect me to mark all that, do you?" So I won't complain now they're handing me all this. You should. Well, perhaps not complain, but give them a word limit at least. That sounds like a good idea. अपने तरीके से सजेशन दिया Long उन्होंने journey? कि अगर आप टीचर हैं तो। Yes, all the way from Edinburgh. And you're heading for the university, I take it? To Cambridge, that's right. ठीक है, तो फाइनली यहाँ कैम्ब्रिज And you are यूनिवर्सिटी का too, I मेंशन can आता see हुआ। that. ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है यू आर टू, आई थिंक आप भी वहीं जा रहे हैं। Is it the shoes? No. अब हमारे पास तीन I ऑप्शन prefer है कि आपने Priestley's कैसे ideas about पहचाना। weather patterns personally. I beg your pardon? Your book fell out onto the seat. Oh, Would you mind if I take a look? oh, yes. Formulation of complex cloud patterns, G.B. McNeill. I found it rather heavy going myself. यहाँ पे You've read it? एक बुक गिर गई थी हमारे I कोर्स had से, to set उनसे this one for इन्होंने my पहचाना कि आई थिंक undergraduates. ये शख्स Not भी that any of them probably read कैम्ब्रिज the ही जा bloody रहा है। thing. The fact that you've got it on you makes me think you're not a student. You're lecturing too. Am I right? Likewise. How long have you been here? It'll be my second year. यहाँ पे जो चित्र है ना जो How did स्क्रीन you- पे आ रहा है एक्चुअली हमें Clara, उस पर how से did you- गैस करना है। ठीक है, क्लारा हमें फाइनली मिल गई your है। bookmark. Don't worry, it's just a telegram. Oh, your telegram. Sorry. It's nothing, just something from my professor. Sorry, I wasn't supposed to see that, was I? It's completely fine, really. Professors do love a telegram, don't they? Yours sounds just like my old one. My office, we need to talk about your work. Like we're still at school. I'm sure you're not really in trouble. It's mad, isn't it? शुरुआत में मुझे लगा था ये These दोनों old men साथ में having पढ़े final होंगे बट say कहानी over our अलग है future, कुछ। ये deciding दोनों whether our कैम्ब्रिज work's यूनिवर्सिटी good से enough. रिलेटेड हैं बट दोनों साथ में How नहीं it पढ़े all हैं। rests on that one final paper we need just to get anywhere. I know. I know. I wish they'd actually come and see me teaching. I don't know why they don't. I'd love to go and see other lecturers if I were them. I should do it more often. You'd be welcome to come to mine. Oh, thank you. If there's space, perhaps. How many students make it to them? Hundreds. That's गेम a के lot of ग्राफिक्स भले undergraduates. सिंपल लग रहे हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया सूट कर रहे हैं। वो Maybe देखिए you'll see for ट्रेन का yourself. जो पीछे का बैकग्राउंड है ना जो विंडो Maybe I से will. दिख रहा है, स्पाइडरमैन वाला, स्पाइडरमैन स्नेक्स वाला जो Oh, फीचर there's है a ना। red light up ahead. ठीक I है, अचानक suppose से we can ट्रेन get a रुक गई little है। more work done. Let me know when we're coming up to the bright lights of Cambridge, won't you? और अचानक से फिर से चेंज हो गया है सीन। अब हम लोग वापस से वही अंटार्कटिका के एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें फिर रेड लाइट का पीछा करना है और रेड लाइट फिर से दूर हो गई है। ये हो क्या रहा है? आई थिंक ऐसा मैंने भी सुना है कि जब कोई रेगिस्तान में फंस जाता है या फिर कोई ऐसी जगह में फंस जाता है तो एकदम सुनसान है, इंसान को भ्रम होने लगते हैं। आई थिंक हमारे कैरेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, उनको भ्रम होने लगा है यहाँ पे। ठीक है, टावर ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ड्रम्स और बाकी की चीज़ें फेंकी गई हैं बट एटलीस्ट वो रेड लाइट के नीचे हम लोग आ चुके हैं। तो ये
बहुत ही अच्छी बात है। गेम के ग्राफिक्स भाई मैं फिर से कहूँगा बहुत ही सही हैं। मेरे ख्याल से ये गेम आपके एक पोटैटो पीसी में, जिसमें बहुत ज़्यादा रैम नहीं है, जिसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, आई थिंक उसमें ठीक ठाक चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेस नहीं ले रहा है ये गेम। Hello? यहाँ पे तो माहौल काफ़ी सही लग रहा है। हम शाउट करते हो कि कोई हो जो हमें यहाँ पे मदद कर सके, क्योंकि हमारा दोस्त अभी भी पीछे गाड़ी में बैठा है। झंडा यहाँ पे दिखता हुआ, लहराता हुआ। ये आउटपोस्ट आ चुकी है ब्रिटिश की। दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है, फाइनली खुल गया। काफ़ी मेहनत मशक्क़त लगी है। Is anybody here? ओ, एक बार फिर की स्टोरी Do come and चेंज। see me if you have any questions on the lecture. One or two would be nice. ठीक है, हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। लोगों ने कोई भी सवाल स्टूडेंट्स ने नहीं You can पूछा, ज़्यादा leave थे भी if you नहीं, like. मुझे तो It's तीन ही over. दिखे। Or do you have a question? I do, in fact. और सडनली वहाँ yes. पे Are we allowed to visit other people's lectures? Oh, it's you. I didn't see you up there. क्लारा की एंट्री Decided पड़ी to है। come. I did. Liked it? I didn't think you're too bad. Well, I'm glad you thought so. The others don't seem to care so much. Make a run for it as soon as they can. Well, they're a loss. I wouldn't worry. People all seem a bit jumpy at the moment. I found it fascinating. Finding a way to trace the paths of all the world's clouds across the sky. It is fascinating, you're right. जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे ना, वो बहुत ही अलग लेवल का है। आसमान में जो क्लाउड होते हैं उनका दुनिया में कहाँ कहाँ सफ़र होता है, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड भाई काफ़ी अलग ही लेवल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ स्टडी किया जाता है कि बादल जो हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं दुनिया में। A काफ़ी अलग wonderful लेवल। subject for your paper, I would have thought. क्लेरा को पसंद आया है। Yes, you would have thought. Well, I've had no luck with mine, if it's any consolation. Just getting anything approved is a nightmare. Still, they can't say no once I've found my beautiful subject, like you. It's true, I am an excellent subject. Hang on, Dr. Hamilton hasn't finished in here yet. ठीक Sorry है। about that. a bit too आई keen थिंक नेक्स्ट sometimes. स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। Sounds like a passionate bunch. You'd be welcome to stay if you like. ठीक है, मैं स्टे करना पसंद कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके जो डिसीजन है ना वो why इम्पैक्ट not? करते हैं। Thank you. Wonderful. I'll just go. तो see क्लारा का to the लेक्चर small चालू हो रहा है, pattern. हम यहाँ पे Give you रुक time गए हैं। to gather your papers. स्टोरी फिर आ गई है प्रेजेंट में, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर अभी क्लियर नहीं हुआ है या पास्ट क्लियर नहीं हुआ है। हम यही समझ रहे हैं कि ये जो है ये प्रेजेंट है, और जो हम अभी देख रहे हैं अचानक से चेंज हो रहा है वो फ्यूचर है। मैं यही समझ के अभी गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं। जो भी बंदा यहाँ रहता है प्रॉपर मैनेज नहीं करता है, साफ साफ लग रहा है देख के। और सबसे बड़ी बात, कोई दिख नहीं रहा है, ये मेरे लिए चिंता की बात है। यहाँ पे हम बाहर भी आ गए, लेकिन एक कमरा है जो हमने चेक नहीं किया है, तो मैं अंदर जाके फिर से चेक करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ इंटरेक्शन तो होता होगा। यहाँ पर एक बोतल रखी है, वल्पोरेट, ये है क्या? सोडियम वल्पोरेट है ये। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर, टाइपराइटर, डियर एनी करके कुछ है। एक लेटर लिखा है किसी ने। ओके, पूरा लेटर हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आता हुआ, पॉपअप होता हुआ यहाँ पे, काफ़ी अलग ही तरीके के एनिमेशंस के साथ।
हाँ ये हिस्सा रह गया था मेरा ऊपर वाला, जो एक सीढ़ी दिखाई दे रही है ना वो, आई थिंक इस मेज पे भी कुछ ना कुछ तो हम छू सकते होंगे। अनफॉर्चुनेटली नहीं। ठीक है, तो आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर कुछ ले, अच्छा मैप जैसा कुछ है। ओके, यहाँ पे बताया है कि 4 पॉइंट अच्छा यहाँ पे आई थिंक जो कन्वर्जेशन होता है वो लिखा गया है क्या। कई बार क्या होता है रेडियो पर जो ट्रांसक्रिप्ट बात होती है ना, वो बात को लिखना पड़ता है कि क्या बात हुई, क्या हुआ, क्या मैसेज दिया। ये आई थिंक वही है। ठीक है, इनका भी स्टोरी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट अगर मैं कहूँगा तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ रहा है इतना। ठीक है, ये जगह हमने देख ली। ऊपर आना ठीक ही रहा है, 2 नई चीज़ों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। वापस जा रहे हैं हम लोग, अब बाहर जा रहे हैं, जो हमने पिछला हिस्सा देखा था पीछे वाला। और हाँ, स्प्रिंट के ऑप्शन नहीं है इस गेम में, तो मैं चाह कर भी इनको तेज़ी से दौड़ा नहीं सकता हूँ। अभी मेरे को बाहर निकलने के बाद 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, या 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे नज़दीक वाला है वहाँ पे हम जा रहे हैं। गेम के एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फुटप्रिंट दिए गए हैं। वो क्या है, आने के फुटप्रिंट, जाने के फुटप्रिंट पहले से ही दिए गए हैं यहाँ पे। जो पीछे वाला घर है वो, ठीक है। अब आई थिंक फिर स्टोरी चेंज हो चुकी है मेरे ख्याल से। पीटर यहाँ पर हमारा नाम आता हुआ फाइनली। 37/4 क्रिकेट का मेंशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ 37/4। अब ये किसी को फाइंड करना पड़ेगा, ये कौन सा मैच था यहाँ पे जो इंग्लैंड 37/4 हो चुका था। फिर से ग्राफिक्स, फिर से स्क्रीन चेंज हो गया। ये एक्चुअली आई थिंक मशीनरी का कमरा है। यहाँ पर जो मशीनरियाँ यूज़ होती हैं इस घर में या इस एरियाज़ में, आई थिंक वो इस बिल्डिंग में रखा गया है। बाकी आई थिंक कुछ नहीं है। एकमात्र कमरा यहाँ पे जो बाकी है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 फुटप्रिंट बने हुए हैं, दोनों इंसानों के ही लग रहे हैं। तो लेट्स सी, क्या पता कोई और शख्स भी हमें मिल जाए यहाँ पे। और एक्चुअली हम उसी को ढूंढने आए हैं, सीधी सी बात है कि कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। एक गाड़ी पे हमें साइन आ रहा है, आई थिंक गाड़ी के अंदर हम एक नज़र मारना चाहेंगे कि क्या है, और अगर ये गाड़ी चल सकती है तो अपने दोस्त को बचाना चाहेंगे। लॉक है। स्टोरी में कुछ बड़ा टर्न आने तो वाला है, ये तो पक्का है। Hello? ओके, एक रेडियो सिग्नल। ओके, ये आई थिंक कनेक्टिविटी तो ऊपर क्या था। यहाँ पर भी रेडियो है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखे गए हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हुए आई थिंक मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। हाँ, Hello? Hello, can anyone hear me? Come in. काफ़ी देर के बाद कनेक्शन बनाने की कोशिश की, फिर स्टोरी चेंज होती है। हम Said you फिर can आ come गए in, हमारे door's पास में। open. Peter! Oh, hello there. Sorry. Ah, good to see some work being done. Good show. My goodness, it's gloomy in here. No, do sit down. You got my note, I presume? I did. Well, I'm sure you've been very busy, which explains why I haven't heard from you. So, seems I have to come and pay you a visit instead. हमसे एक सीनियर है, आई थिंक उनके लिए हम काम कर रहे हैं कुछ। It's still very much work in progress. उनका काम अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में। वो देखना चाह रहे हैं, वही दिखा रहे हैं हम लोग पेपर में कि And हमने most ये of काम them किया are है। just weather readings from my contact in South America. और ये वही है आई थिंक टॉपिक, बादलों वाला।
not much to read yet. You will tell me when you've got something, won't you? As your professor, I do need to be kept abreast of things. एक तरीके से वो नहीं होती अपनी, क्या कहते हैं, डॉक्टरेट की जो डिग्री मिलती है, पीएचडी। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो हमारे प्रोफेसर है ना, ये खूब मजा ले रहे हैं स्टूडेंट, हमारा मतलब उनके अंडर में हम कर रहे हैं काम। Good grief! I'm not surprised you're getting nothing done with all this racket. What is it this time? Oh, more of them today, I see, getting ready for another march, I suppose. And I can't quite believe how many women are out there. The more they let in, the less serious studying seems to get done in this place. जो सर है उनको डर इस बात का है यहाँ पे I fear. कि जितनी ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी यहाँ पर काम कम होगा, पढ़ाई लिखाई कम होगी। Sounds like a peaceful protest. Not doing anyone any harm. Well, you know what I mean. Anyone who's for nuclear disarmament is anti-British, as far as I can see. Can't stand all this politics in my college. Wanted to talk to you about that, in fact. About politics? That's right. Sit down. स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो रही है, पढ़ाई लिखाई बादलों के रिसर्च को छोड़ के अब पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है। What worries me is that all that is distracting people from the very good academic work we do here. This is where I really do need your help, Peter. Very happy to help, always. As you know, I have some friends in high places. I need to persuade these people that this college deserves to survive, deserves the reputation we've built over the years. Now, there's a lot of talk suggesting we're a soft touch. ठीक है, इस कॉलेज पे आरोप लगाया जा रहा है कि कम्युनिस्ट हो गए हैं, यहाँ पर कम्युनिस्ट लोग बनाए जाते हैं। प्रोफेसर चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा लिखें, मतलब पीटर ऐसा कुछ लिखे कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनका नजरिया बदल जाए इस इंस्टीट्यूट के बारे में। I will. Of course I will. It's been हम बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बात से, बट 3 साल बीत चुके हैं। Sure you understand what I'm saying? Not quite. Is this paper really taking up so much of your ample brain power? I mean, your position isn't necessarily permanent. I'm sure you're hoping you don't have to stay in this dark little room forever. And I'm sure you'll rather leave it after a well-deserved promotion. That's all. प्रोफेसर को डाउट हो रहा है कि ये जो समय हम पूरा बिता रहे हैं ना, वो वर्थ इट है कि नहीं। The atmosphere here, things have been a little fraught. You must have noticed it's not just those protests that I'm concerned about. You know all about the business with the Cambridge 4, I presume? I don't, actually. You don't? A Soviet spy ring, recruited right here in Cambridge, passing secrets to the Russians for years, and we तो knew एक nothing बहुत about बड़ा it. पर्दाफाश हुआ है कि इस कॉलेज में एक रशियन स्पाई था They used to hang जो रशिया के साथ सारे सीक्रेट शेयर करता था। ओह ओके। Well, thank goodness we don't. और उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। Yes. Yes, we can't stop the world from moving on. They think the Cambridge 4 might now be the Cambridge 5. They still don't know who the 5th member is yet. I need to be absolutely sure we are on our guard. So I'd like you to keep an eye out. You would tell me if you saw anything suspicious, wouldn't you? I can trust you on that. Absolutely, you can trust me. तो इन्होंने हमें एक और काम भी दिया है कि अपने आजू बाजू हमें नजर रखनी है। You carry on. अगर कुछ भी अजीब लगता है तो प्रोफेसर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सीन फिर से चेंज हो चुका है, हम लोग फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। It's Peter here. ठीक है, हमारे दोस्त के साथ कांटेक्ट हो चुका है। मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखा हुआ है तो। Something's not right. I think something's happened here. Something's happened. What do you mean?
एक्चुअली मेरे पास दो ऑप्शन था, मैं चाहता था उनको भरोसा दिला सकता था, बट मैंने सीधा सीधा ना बोल दिया है। There's nobody here. मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ अजीब हुआ है, कोई है ही नहीं। और अभी थोड़ा सा हर चीज़ में मैं ना कह रहा हूँ। Floyd, it's not just that the place is empty. Everyone's things are here. There are just no people. It's like they've all vanished. हम बता रहे हैं कि यहाँ तो हालत ये है कि मानो सब कुछ गायब है। वो कह रहे हैं कि शायद थोड़ी देर के लिए बाहर गए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ अपने लिए। Maybe, but there's a vehicle here that's been abandoned too. And wherever they went in a hurry. There's footprints everywhere, and they left a mess in their living quarters. What kind of mess? Broken glass, an overturned chair, that sort of thing. Like there's been a fight? What, maybe? Or maybe there was an emergency. Someone got दोनों sick लोग or अपने अपने something. तरीके से अजम्पशन कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है लड़ाई हुई हो सकता है कोई बीमार पड़ गया हो। I want you to get out of there as quick as you can. You hear me? और हमें कहा जा रहा है कि वहाँ से जल्दी Okay, से I'll जल्दी wrap it निकलो। up and I'll come back. और ये क्या सिचुएशन है? Peter, took you 2 hours to get there. You come back here and then where are we? Back to square one. बट वो कह रहे हैं कि ना निकलो तुम वहाँ से, क्योंकि 2 घंटे लग गए यहाँ पे। और क्या सच्चाई है पता नहीं। For sure, but it's possible that the base बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। Attacked? This is a research station. Who would attack this place? Soviets. सोवियट्स का नाम यहाँ पे आता हुआ। यहाँ पे चाइना का ऑप्शन है, चाइना की पता नहीं है, चाइना का ही था। War hasn't been so cold around here recently. People are touchy. I've heard stories of shots being fired, and you could kill a dozen men down here and no one would know about it. Floyd, you're making me nervous. I've met the guys who work at Deception Point, mate. They run a tight ship. It's not like them to leave it completely deserted without telling anyone. And now you're telling me there are signs of a struggle? कमेंट आ रहा है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ तो हुआ है खराब यहाँ पे। No, there's a chance I can raise someone from here, but if you come back and I can't, then we're back at square one. They'd have to have us both on their case. Look, I'll keep सामने से trying to क्लियर नोटिस आ रही है, कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलो। All right, I can do it, but where the hell would I go? सवाल आ रहा है कहाँ निकलो। Right? Anything in there which could help tell where we are? ठीक है, अभी तो हम अपना लोकेशन फाइंड कर रहे हैं। एक मैप हमें मिला हुआ है। There's a map here. ओके, Great. Cool, what's on it? डिसेप्शन पॉइंट I can see वहाँ where पर I am. लिखा गया है। The base at Deception Point. Okay, great. Anything north of there? उसके नॉर्थ, मतलब आई थिंक ऊपर देखने को कह रही है। हाँ, There are Two more dots, buildings to the north. Do you know what they are? More buildings. I know the Norwegians are stationed out here too. That'll be the Norwegian base. I'm guessing they're not a threat like the Soviets. Don't worry, the Norwegians are allies. They'd help सिचुएशन चेंज हो गई वॉर में भाई। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है दुश्मन पता नहीं लगता। तो एक नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ की भी बिल्डिंग वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम लोग अभी उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे रहना तो सेफ नहीं है। चाबी हमें मिल चुकी है। Let's hope they filled the tank up. Can you see a route on the map? Any landmarks? ठीक है, हाँ एक रॉक आ रहा है, कैथेड्रल रॉक। ये कह रहे हैं रॉक, कह रहे हैं कि अब नज़र मारो कि क्या कुछ बीच में एक चेक पॉइंट जैसा कुछ आ Up रहा है। ahead, there's some kind of huge तो एक rock कैथेड्रल mountain रॉक here. करके बीच में आ रहा है। वहाँ तक पहुँचने से Cathedral पहले ये Rock. भी आएगा। Looks like the highest point around. Maybe I'll be able to see the Norwegian base from there. Sounds like that's your first destination. Peter, can you see anything you can वो कह रहे हैं कि एक आध सामान भी देखते चलो जो Got my हथियार की hands. तरह यूज हो सके। That's all. Well, don't go searching for one if there's nothing else in there. You don't know when they might come back. Get to the vehicle and head to that rock as quickly and as quietly as you can, alright? हमारे दोस्त कह रहे हैं चलो छोड़ो Just make sure you वीपन send those वीपन, वहाँ flares से up so I निकलो can find बस। you again. और हाँ, फ्लैश भेज देना, मतलब Floyd, are you फ्लैश still वो जो there? डालते हैं ना सिग्नल, वो कर देना। Sorry, I had to move my leg. Look, don't hang about, Peter. Get going, for Christ's sake. I'll keep broadcasting on this frequency when I can. Try and pick it up again when you get to the base. I will, and remember those flares. Yeah, I heard you. Look, I've got to go. You just get to that cathedral rock. Over and out. तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कैथेड्रल रॉक के लिए।
एक और डाउट है, पता है क्या, कि पेट्रोल होगा कि नहीं गाड़ी में। प्राइस इतने बढ़ गए हैं, पता नहीं भरवाया भी होगा कि नहीं, बट मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे और पेट्रोल भी होगा। एनिमेशन इतने स्मूथ है ना, मतलब स्मूथ मतलब अलग तरीके के स्मूथ हैं। वो 60 FPS वाले स्मूथ नहीं है, बहुत ही अलग तरीके। ठीक है, गाड़ी हम चला रहे हैं, ओके, ये तो भाई बहुत ही अलग फीलिंग आता हुआ। स्नो में हम गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी, मुझे नॉर्थ जाना था, तो नॉर्थ तो भाई देखा जाए तो पेट्रोल भी ख़त्म तो हो ही रहा है। ठीक है, मैं खाली स्ट्रेट दबा के रखा हूँ, गाड़ी अपने आप ही डायरेक्शन ले रही है, बट आई थिंक मुझे ध्यान रखना है आगे। अच्छा हाँ, वो पहाड़ सामने दिख तो रहा है, पहाड़ सामने दिख रहा है मुझे, जो मतलब थोड़ा सा लेस आइसी है, उस पर कम है। और हाँ, नीचे मुझे एक पाथ भी दिख गया। ओके 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 ओके, गेम हिंट दे रहा है। I'm absolutely soaked. और अचानक से हम लोग पुरानी यादों में खो चुके हैं, और यहाँ पर भी हम राइडिंग ही कर रहे हैं। It must be freezing. Don't know what happened. The bus just didn't turn up. नाइट का वक्त है, हल्की हल्की रोशनी है। Sorry, it's your peepers. Oh, I haven't got them all wet. Oh, don't worry about it. So this is your grand tome about the clouds. Would you mind if I take a look? Of course. I mean, if you can understand them. Excuse me. अब देखिए, मेरे पास ऑप्शन तो है कि मैं गाड़ी ठोक भी सकता हूँ, बट Sorry, अभी my रिस्क लेने के goodness. मूड में नहीं है। Do you have a right to be here? You know, I have earned my place. What are you talking about? Maybe this is a bad idea. I don't want to read them anyway if you don't think I can understand them. No. I meant they're probably illegible. I meant you might not be able to read them. That's all. Oh, sorry. Just, I get that kind of thing a lot. I'm a bit sensitive. It's fine. I thought you morphed into my old professor there. My office. See me. Anyway, sorry. As I said, don't worry. Take a look if you like. Oh, सारी Thank बवाल you. किताब, वो जो नोट्स है वो देखूं कि ना देखूं के लिए बवाल चल रही है। वो कह रहे हैं कि आप Excellent देख लो, note वो taker. कह रही है पता नहीं मुझे देखना चाहिए कि नहीं। तो the rest is सारा probably फंडा वही है यहाँ classified, पे। top secret. And where is yours, may I ask? May I read that? Stop it. You haven't started it, I know. I will. I haven't had 3 years. पूरी खामोशी छा गई है। वो लेडी जो है 3 साल से हैं, बट Sorry, इन्होंने काम ही नहीं that शुरू was a किया। bit low. हाँ, I'm just a bit tired at the moment. My proposal was rejected again yesterday. मतलब उन्होंने बोला Needs आप more भी मुझे work. अपना पेपर दिखाइए, तब ये You can रिस्पॉन्स talk to आया me, कि you नहीं है know. अभी मेरे पास कुछ भी। I know what it's like trying to find the right subject. I'm starting to wonder if I'll ever find it. My friend Molly's nearly finished hers, and here I am, not even at the starting line. You'll find it. I'm sure of it. Thanks. क्लारा Doctor. कह रही कि मुझे आज तक मतलब या तो रिजेक्ट हो जा रहे हैं I'll just put you टॉपिक, safe down या तो here. मिल नहीं रहा वो टॉपिक। Cambridge. Even on a day like this, I do love this journey. In my car, you mean? Yes. Well, I'm enjoying it too. Picking you up in this mighty steed. Yes. मुझे क्यों लग रहा है कि It's a कुछ ना कुछ big bus एक्सीडेंट when you होना can ही have a लिखा ही car है like क्या this. स्टोरी में? Your presence tells me this is obviously better for picking up ladies. Oh, well, you can just about fit one in if that's what you mean. Anyway, this bus और will जी be हाँ, just मैं fine. ही मैनेज कर रहा हूँ, राइट टर्न लेफ्ट Thanks टर्न। again जैसे for मैं राइट ले जाऊँ, देखो राइट जा getting रहा out of the rain है, like लेफ्ट that. जाऊँगा It तो was- लेफ्ट जाएगा। Extremely kind. ये जो गाड़ी चल No, रही है ये मेरा no, ही it was an कमाल है। inconvenience. It won't happen again. ओके, रेडियो लगा रहे हैं तो माहौल बना रहे हैं। न्यूज़ आ चुकी है BBC लाइट की तरफ से। This is the BBC Live program. Here is the news. Talks began today in Washington between Britain, the United States, and Soviet Russia over the renewal of the Antarctic Treaty, which forbids any acts of military aggression in Antarctica. ओके, Reports of recent skirmishes on the continent have established the need to reaffirm the worldwide commitment to peace. All eyes will be on Russia, whose reported reluctance to rejoin the talks is a point of concern for the British government.
In a statement read outside the White House, Prime Minister Macmillan called on Russia to engage in the talks wholeheartedly to ensure a lasting peace in the nuclear era. ठीक है, एक पीस साइन करने के बारे में है कि भाई अंटार्कटिका में जो रिसर्च सेंटर्स हैं उसके ऊपर कोई एक दूसरे पे नुकसान नहीं करेगा। रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर की तरह उनको रहने दो। तो आगे क्या हुआ वो अभी आगे की स्टोरी में पता लगेगा, बट अभी के लिए कहानी यही है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन स्टोरी फिर बदल गई है। अभी हम फिर आ गए अंटार्कटिका के उसी एरिया में जिसके बारे में पीस पेपर पे साइन होने वाला था। अब हम जिस एरिया से निकले हैं रिसर्च सेंटर से, वहाँ सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। That bus? What's that, 5, 6 in a row now? I don't know, I counted 7 maybe. It'll never happen again. ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते फिर कुछ यादें आ रही look, there's हैं। Molly. फिर एक बार हम लोग गाड़ी में यहाँ पे, Why? और इस बार दिन का माहौल है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओके, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब किस चीज़ के लिए वो देखना होगा। हमारा क्लारा की एक फ्रेंड है मॉली, वो आई थिंक यहाँ पर प्रोटेस्ट का हिस्सा है, तो हम भी उसके साथ मिलते हुए। Oh, it's wonderful to see you. Well, you can't miss us all today. Is this your handsome bus driver? I didn't call him that. Molly, this is Peter. बस ड्राइवर this is कह दिया Molly. मुझे हैंडसम, लेकिन तो मजाक भी उड़ाया है और शाबाशी भी, मतलब अच्छा भी कहा है इन्होंने। Heard what? You'll be joining us, I hope, Joining you here outside? on the big march from ठीक है, इनका Aldermaster प्लान to है the बहुत atomic बड़ा weapons मार्च factory. करने का, खिलाफ This मतलब time जाने we're का, going to start there, प्रोटेस्ट then करने march का, on London, straight to Parliament. Tens of और thousands. सीधा of us. पार्लियामेंट जाना They'll have to चाहते हैं। listen to us this 10,000 time. 4 days लोग, walk, isn't that right? Oh, that's a long walk. 4 Worth it दिन to save the लगेगा। world, don't you think? Of course. Oh, sorry, Peter, Molly is a lecturer at the college too, when she's not showing me the ropes or working on her opus. Oh, that's all done now. The paper's published. Oh, that's wonderful. Good riddance too. I couldn't bear having it hanging over me any longer. Congratulations. अब ये दोनों बात कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, तो Thank you. I can focus एटलीस्ट on this for a कांग्रेचुलेशन while. कह Much दिया more है। important. मेरे से नहीं बात कर रहे, लेकिन आपस में ही कर रहे हैं। Do you think this will make a difference? But jolly well has to, don't you think? Considering what's at stake, we're all under threat. I would have thought as a man of science you'd know all about it. Clara mentioned you'd been studying radiation carried by the clouds. You told her that? I didn't know it was मैं an official रेडिएशन secret. कहाँ कर रहा हूँ स्टडी, No, ये no, क्लारा ने stop, इनको ये stop, बताया यहाँ पे It's fine. कि मैं बादलों के The द्वारा जो radiation रेडिएशन is होता है यहाँ पे उसके बारे में One स्टडी कर hydrogen रहा हूँ, bomb ऐसा could तो कुछ kill नहीं 1 है। million people in an instant. But then the radiation spreads and could kill millions more. अरे Slowly this time. The British government एक is building more एक bombs when they हाइड्रोजन should be doing बम, the लाखों opposite. लोग मर जाएंगे, ये Disarming, सब क्या है? setting an example to the world. It must be more complicated than that. Wouldn't the Soviets think we were weak if we did that? We're not naive, you know. We want the three sides to stop entrenching themselves. All this posturing of theirs can only end one way. It's got to be unilateral nuclear disarmament. Otherwise, every day we are one step closer to the end. No, they'll work out a way. And what if they don't? सवाल ये है ना कि जिसके पास न्यूक्लियर है Right, वो I've सोचता got है a lecture to पावरफुल है give. वो, Peter, जिसके पास would नहीं you है mind if I उसको had a लगता है lift कि for the भाई last mile? या तो उसका खत्म करो या तो Good to हम meet भी you, न्यूक्लियर Peter. लें, बट इन दी एंड पिस्ती तो पब्लिक ही है। Pleasure's all mine. तो You're ये coming on जो the है march, ये aren't you, चाहती है कि Clara? I शायद wouldn't miss खत्म it हो for जाए anything. न्यूक्लियर And वाला you, सारा Peter? फंडा, सब खत्म कर दें यहाँ पे। अब ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, ज्वाइन होने का मार्च में या फिर ऑफिस जाने का। भाई मैं न्यूक्लियर खत्म करने के पक्ष में अभी तो नहीं हूँ। I'd rather too अभी much work, यहाँ पे actually. क्या होगा आई डोंट Don't नो, think I'll मेरे get away. डिसीजन से Shame. क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। Well, in the वो कह रही meantime, है I'm शेम sure है, Clara मतलब will आप take नहीं very good care ज्वाइन of हो you. पा रहे हो। ठीक है, अलविदा कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक She क्लारा will? ज्वाइन That's करेंगी यहाँ पे, enough, लेट्स सी। Molly Shanahan. We'll be off ठीक है, now. दोनों जा रहे हैं, ओके। You go and get your bus, Clara. Ding ding. Impressive, isn't she? She's louder than everyone. I'll give her that. उन्होंने पूछा क्लारा ने कि क्या ये इम्प्रेसिव नहीं है, तो जवाब आता है कि नहीं, मतलब ना नहीं, बट बहुत तेज बोलती है और नज़र में आने के लिए यही काफ़ी है। ज़ोर से बोलो, भले झूठ बोलो, बट सही है, सुनेंगे लोग। आज रोज़ सुनेंगे तो सच सच भी मानने लगेंगे। दुनिया में ऐसा ही है, अगर आप कोई भी चीज़ फुल कॉन्फिडेंस के साथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ना, दुनिया मानेगी।
कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के बाद। फिर से पहुंच चुके हैं अंटार्कटिका, गाड़ी चलती हुई उसी कैथेड्रल रॉक की तरफ। इसका मैंने म्यूज़िक थोड़ा सा कम कर दिया है कॉपीराइट के लिए, वरना इसका म्यूज़िक भी बहुत खूबसूरत है। ये गेम आपको 377 रुपीज़ में मिल जाएगी, 370 ऐसे, मतलब 400 के अंदर की गेम है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो वही स्टीम पर से बाय कर सकते हैं। काफ़ी दूर है अभी तो लोकेशन, बट आई थिंक हम फिर से इसीलिए पहुँच चुके हैं अपने पास में। सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई इस कमरे से बाहर निकल थोड़ा। Good to hear, old chap, but we've heard it before. I have to say I've never really understood it. Here you are writing about clouds, and yet you never see the sky. वो कह रहे हैं कि तुम क्लाउड्स के बारे में लिख रहे हो, बट क्लाउड्स तो देखते ही नहीं हो। It's about the ideas, the words. मेरा जवाब भी Let's see some तैयार of ही these है। words then, shall we? Come on, man or a mouse? It's always top secret, is it? You can trust me. What do you think, Sam? I'm sure some of it is very good. Here, it will be good. First rate. Don't worry, old chap. Well, we'll hit that wall sometimes. It's all part of writing a paper. Now, come on, don't be so modest, Sam. You dashed yours off in a few months. Well, maybe I was fortunate, but the point is... The point is, you set your sights straight and true, sat down and wrote the damn thing. It wasn't quite like that. Well, you did it, and now here you are, senior lecturer. Which makes two of us. Did Joseph not mention he got a promotion too? It does tend to slip his mind for a few seconds occasionally. Well, you know what could be open to him if he gets this right and gets promotion? His own department. Eventually. Professorship. You can't reach those heights if you stay in this hovel for the rest of your life. शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं true, कि but ये I'm- लिख My दो, वो point लिख was दो, that saying to Peter it's all part of the process is just kind और words. आपका What we need मतलब to रास्ता do is क्लियर हो जाएगा। help our poor friend here be a man and write. मैं अभी नेगेटिव के साथ जा रहा हूँ, उनकी Maybe सोच it के just साथ मैं needs a नहीं bit जा of a रहा। rewrite. No, you can't start. मैं अभी भी again, अपने Peter. टॉपिक पे I'm right. विश्वास Aren't I, रखा Sam? हूँ। I think he's right, Peter. I know it's tempting to want to forget everything and start again on a blank page, but then you're risking making the same mistakes all over again. You know, sometimes it's better to see where you've gone wrong, that's all. Let it help you. Good things might come of it. Good things like a promotion, I might add. Like Joseph says, don't start again. All right, then. What do you suggest, Sam? I know what you need. Go on, then. What? What you need is some inspiration. ठीक है, सजेशन आता हुआ इनका। Those three 3 new girls, okay. You know the ones. Undergraduates. They'll be at the Fox and Hounds this evening, and so, my good man, shall we? 3 लड़कियां नहीं आई हैं, ये भी 3 लोग हैं। 8 बजे मिलने का प्लान बना रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। मैं अभी हाँ कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी समय ऑफिस में बिता चुका हूँ। तो लेट्स सी उस जगह पे क्या होने I was वाला hoping है। you'd say no, so there'd be 2 of those girls for me. Come on. Let's leave वो them to कह it. रहे हैं Good luck with कि it. मुझे लगा तुम ना See you कहोगे तो later. 2 गर्ल्स के साथ मैं Don't be बात shy, करूंगा Peter. और Come एक को along. इसके लिए छोड़ूंगा। डोंट बी शाय Man पीटर। or a mouse? इंसान बनो या चूहा बनो, मतलब एक बिल में रहने वाला चूहा बनो या इंसान बनो। ठीक है, रात का समय हो चुका है, कहानी अभी भी there पीछे you नहीं जा are. रही है। 7 o'clock, I thought you said. Oh, fashionably late. Come sit, I got you some tea. Oh, great idea, thank you. Sugar for you? 2 शुगर डलवाता हूँ। Yes, 2 for ये भी me, ऑप्शन है। Okay. शुगर डलवाना है कि नहीं डलवाना है। ठीक है, यहाँ पे बातचीत के लिए टॉपिक्स हैं। मैं My चुनना goodness, उससे you're पहले कुछ soaked. अपने Where's आप your ही चुन लिया। jacket? Oh, बारिश well, हो रही थी, not yes, on तो me, भीग चुके of हैं हम course. Oh. Mind on other things. The paper again? Still all consuming? I can handle it. Oh, I
I don't blame you. I've been thinking about it quite a bit too. You have? About my paper? Yes? You sounded rather blasé about it before. Oh, I certainly didn't mean to. I think there's really something in it. Could you finish it for me, do you think? I thought you could handle it. I can. Well, it's a beautiful idea. I think that's why it stuck with me. It means a lot that it did. It would be like having a superpower. अभी Being ये able जो है to ना predict क्लारा, the path ये of the हमें clouds. इंस्पायर कर रही हैं कि आप पेपर And के next साथ step, जाओ. control the weather. उधर हमारे दोस्त कह रहे हैं कि भाई वहाँ You क्यों could समय be बिगाड़ रहा है, cloud तू man. कुछ अलग You're लिख दे taking this टॉपिक, seriously. आसानी से प्रमोशन मिल जाएगा. Well, you could predict when it's going to rain at least. This weather reminds me of home. Was it this miserable all the time? No, although Edinburgh always looked better in the rain to me, so that's why I choose to remember it. That's where you grew up, isn't it? That's right. I had a wee cottage in the Highlands too. Our parents would take us up there once in a while. Us? Brothers and sisters? One brother, older. ठीक है, अपने एक बड़े भाई का जिक्र करती हुई है कि ये भाई बहन थे. Are you alright? Yes, sorry. I didn't mean to pry. It's just, he was killed in a motorcycle accident near the cottage when he was 18. So sorry. It's not your इस fault. गेम की भाई एक Life. बात तो मानने पड़ेगी Or, कि well, the opposite. वॉइस ओवर्स बहुत ही सही हैं. How old were you when it happened? इनके भाई की 16. मोटरसाइकिल चलाते But वक्त still, I मौत हो गई have थी a lot दुर्घटना of में. happy memories about him. At the cottage, he always used to get up early, go out into the forest, bring back armloads of wood, wood for the fire. It was sweet, really. The house was already warm for us. I like the sound of doing that. I could do that. Grab an axe, go out each morning, chop wood. So you could be the woodsman then. Oh, better than the cloud man. Strong. Oh, no, I like Cloudman. So, these clouds, your beautiful subject. एक बार फिर What do you टॉपिक think पे आ you- गए हम लोग क्लाउड के. Well, that's simple. More readings to work with. Sounds achievable. Well, in theory, yes, but they need to be first-hand, verifiable. All right. I take it all has to be taken somewhere where the readings aren't affected by other factors. Sounds like you've got it as much as I have. Maybe. The thing is, it needs to be somewhere very remote, and I need to be there for a while, you see, to get enough readings. That makes sense. And I suppose the university budget doesn't exactly allow you to travel the world. Maybe. सीधी सी बात है, बादलों को पढ़ना है तो भाई उनके That साथ ट्रैवल cottage करना I पड़ेगा. ये mentioned, कह रही है इतना it's in the बजट तो middle of देगी नहीं nowhere, a high place यूनिवर्सिटी. for miles around. Now would be the time to go with summer coming up. No students to worry about. Not that I had that many to worry about. Well, I'd have to check with my father, but it's remote, just a little place in the woods with a log fire and not much else. But if that's what you're looking for, I am. That's just the kind of place I've been searching for. promise me you're serious about this? Oh, I promise प्रॉमिस you that. दिया है यहाँ पे. आई promise थिंक me that. ये Anyway, क्या no more टॉपिक्स आ रहे past हैं. tense. No more past tense, eh? Sorry, I didn't know how I felt about the cottage until I started talking about it. I shouldn't have said anything. We don't have to go. Thanks for understanding. But still, it sounds perfect for the work. I think I'd be able to find somewhere else, you know. I must be able to. It's just. ये अपने फादर से हमारी I मदद don't करवाना know, चाहती my थी. अब कह रही father शायद would मैंने say मिस्टेक about कर me दी being यहाँ an पे. unmarried man up there. आपसे जिक्र नहीं करना था. मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना, You're कोई worried बात about नहीं what यार, your father मैं would कर think? लूँगा यार. No, not that. It's just not. पता नहीं exactly तुम्हारे modern. पिताजी हाँ कहेंगे ना कहेंगे Exactly. मदद करने के लिए. Ringing the changes like malls. कह रहे हैं कि शायद वो मॉडर्न टाइप के Her नहीं father even हैं. knows what she's up to. You should have seen Malls on that march, striding forward in front. Shame he didn't come. Quite the force of nature. बारिश बहुत तेज हो गई है. Do you think the bus would make it there?
bus that would cost a fortune. Not that bus, silly. You know, your bus. अच्छा ये बस Ding ड्राइवर ding. हैं. Oh, the mighty वो जोक अब steed, कंटिन्यू हो of गया course. इनका बस ड्राइवर Well, the वाला. roads are pretty rough. Would you cope with it? We can always try. स्टोरी अभी भी पुराने जमाने में चल रही है. Careful. We want to make it in one piece. This really is the middle of nowhere. हम Just उसी कॉटेज keep में जा रहे driving. हैं जो इनके I फादर know it हमारी seems to हेल्प go on करेंगे forever. क्लाउड Just स्टडी करने के trust लिए. me. यूनिवर्सिटी के cottage is भरोसे only a रह नहीं few सकते. miles अरे away अरे now. गाड़ी देखना. मैं अभी तक एक बार भी टकराया हूँ नहीं पूरी How are you तरीके feeling से. about this? मूड अभी भी नहीं Oh, है. जगह तो बहुत खूबसूरत है यार, I'm fine. मानना पड़ेगा. एकदम अलग ही लेवल का Okay, a है. bit strange to कुछ. be honest. Like I'm about to step back in ये time. गेम तो ऐसी है Haven't कि been आप here in भाई so थके long. हो ना I'm और a आप bit ही लगा दो nervous. गेम I don't और know. देखो खाली. I don't quite know if things will feel different coming back. खेलो खाली मतलब. I hope you like it. Oh, I'm sure I will. And thank you for asking your father. I know this is a big thing. Well, I told him I was taking a friend. I didn't mention you were a man. Oh, इनके पिताजी ने Do you बताया think नहीं he है कि ये वो disapproves? जिसके लिए मदद Not मांगी वो exactly. लड़का है. चलो No, देखें. Well, he is वही very बात आ गई कि old-fashioned, पुराने जमाने की but- सोच Thank वाले you for पिताजी हैं coming क्लारा along. के. अरे भैया देखना. well, inviting me and coming along. Oh, no. I mean, without me, how'd you find it for a start? I couldn't rightly let you run away all by yourself. So you're running away with me? Stop it. This is purely professional, isn't it? We could run away. Ditch the paper. Live in the woods. You are being presumptuous, aren't you? No, I'm here to help. You'll need help with the equipment and recording all the data, all that. I couldn't leave you stranded up here in the middle of nowhere. I'd build us a shelter, be the man of the woods. Oh, ऑप्शन दो थे कि यहाँ पे the जंगलों में woodsman. शिकार करोगे कि शेल्टर बनाओगे. मैं I'm शेल्टर के साथ telling you, गया. I could do that. Just be the kind of man who remembers the अरे fields फ्री of टाइम में time when we're off मतलब to the यार middle of पूरे दिन nowhere. बादल थोड़ी ना देखते Well, रहेंगे I am. आसमान में. I hope this isn't a big mistake. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ रही सामने से. और रोड इतना अच्छा बना के दिया, ये भी काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए. जनरली ऐसा नहीं होता. ठीक है, ऑन तो कर दिया है. अभी देखो क्या म्यूज़िक आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे फिर से BBC आ गया है. यार ये है क्या? न्यूज़ आई है कुछ, ध्यान देना है. This is the BBC. Here is the news. The talks in Washington over the renewal of the Antarctic Treaty were in deadlock last night, with Soviet Russia threatening to walk out of discussions early. The new president, Lyndon B. Johnson, made an impassioned speech during which he criticized the Soviets' aggressive stance and reasserted the need for compromise. The president described the Russians as playing a lethal hand and asserted that continuing to do so would risk leading the world into war. तो भाई स्टोरी ऐसी हो गई है कि रशियंस ने समझो डील जो करने वाले थे ना, शांति प्रस्तावना, जो पीस पेपर साइन करने वाले थे, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है. वो लोग उठ के चले गए हैं. धमकी दे दी उन्होंने कि भाई हम नहीं साइन करेंगे. और उधर ब्रिटिश प्रेसिडेंट ने उनके खिलाफ कुछ वर्ड भी यूज़ कर दिए कि ये लोग तो भाई बहुत अग्रेसिव हैं. अंटार्कटिका में जो रिसर्च होता है उसके खिलाफ. अभी क्या है आगे वो स्टोरी कन्वर्ट हो गई. अभी यहाँ करंट में आ गई, करंट सिनारियो में हम ऑलमोस्ट समझो बस पहुँचने वाले हैं. मुझे सामने फिर बहुत ही कलरफुल हाउसेस दिखाई दे रहे हैं. मतलब टेम्पररी हाउसेस हैं. ठीक है, पहुंच चुके हैं हम लोग. उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कुछ. अब सीधी सी बात है, ये नॉर्वे वाला है तो यहाँ झंडा अलग होने वाला है. झंडा ऑलरेडी अलग दिख रहा है हमें. अब देखना ये होगा कि नॉर्वे वाले ऑन द पेपर, जहाँ तक हमें पता था, फ़ोन पे भी जो बताया था रेडियो पे, कि हमारे दोस्त हैं. अब सिनारियो बदल ना गया और मुझे डर लग रहा है इस मामले में. ओह, एक मिनट. Soviet base. ये तो झंडा सोवियत का लगा हुआ है. वो चाइना वाला झंडा नहीं था, सोवियत का झंडा था. ओह,
ये कवर ले लिया हमने चुपचाप। अभी दिक्कत हो रही, पत्थर उठा लिया है हमारे कैरेक्टर ने। और हाँ, मुझे पहली बार इस गेम में डर लग रहा है। अब भाई अंटार्कटिका में हम अकेले थोड़ी ना सरवाइव कर पाएंगे, चाहिए तो होगी मदद। ओके, पत्थर लेके हम घुसे तो जरूर है, बट पत्थर छूट गया यहाँ से, मतलब छोड़ दिया है। देख के सरप्राइज है कि ये जगह भी खाली है, दरवाजे पहले से खुले हुए हैं अंदर के। सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। चीज़ें यहाँ भी फेंकी हुई हैं, देख सकते हैं नीचे कैंस फेंके गए हैं, खाली है, एम्प्टी है। एक नोट्स भी रखी है, आई थिंक काम आ सकती है यहाँ पे। अभी तक तो नहीं आ रहा कुछ ऑप्शन। स्टोरी फिर से चेंज। Don't you worry now, Pete. We're here for you. Your father's on his way up. Said he'd like a word too. Your father is on his way. Such a big boy now. Okay. I think ये इनकी मदर है. What happened today? It's not your fault. I just want you to know. दो सैनिक हैं, एक बंदे पे गोली टांगने हुए हैं. I bet they're just trying to make you feel small because they're feeling small inside. Don't you listen to them, all right? All right. Here he is. You sleep well. अच्छा हाँ, यहाँ मैं सोया हूँ, अब मेरी नज़र गई यहाँ पे। हाँ। That'd be nice. ओके, अब मेरी नज़र गई, मुझे दिख ही नहीं रहा था। मुझे लगा किसको देख रही हैं, अंधेरे में बैठी हैं, बट ये एक्चुअली बात कर रही हैं। यहाँ पे सोए हुए हैं और ये इनके हमारे फादर आए हैं, मतलब हमारे गेम में जो पीटर हैं, पीटर के फादर। अब पता नहीं मदर हैं कि मेड हैं, समझ नहीं आ रहा। It's all right, we'll be fine. Well, if you're sure. Good night, Pete. Night. Oh, Peter. What are we gonna do with you? What are we going to do with you? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये कैसा सवाल है? Your mother won't like me saying this, but it's true. You've got to learn to stand up for yourself. Okay, हम I think कुछ बुली किए गए हैं। Hit them back. और यहाँ पे हमारी मदर कह रही थी कि भाई वो लोग खुद छोटे हैं और वो तुम्हें भी छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो फादर हैं इस गेम में, वो कह रहे हैं कि एन आई फॉर एन आई, मतलब अगर कोई तुम्हें मारता है उसे तुम और मारो। मैं मानता हूँ आज के समय में यही होना चाहिए, मतलब हर बात में नहीं, बट कोई बहुत ज़्यादा करे तब आई थिंक ये होना चाहिए। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, बट एक लिमिट थोड़ा के बाद। हो सकता है कई लोगों को ख़राब लगे, बट जो जिसके साथ बीतती है आई थिंक वही एक्स बता सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सहते लोग आपको उसी तरह का बना देते हैं, उसी तरह का समझते हैं कि ये वही है। तो आई थिंक ये सही है, अगर आप थोड़े लायक हो तो यू शुड हिट बैक। Long day tomorrow. So not another peep. All right? ये कह रहे हैं कि कल मत डरना, वाट लगा के आना उनकी। एन आई See you in the morning. फॉर एन आई। No more tears. गेम के ग्राफिक्स ने भाई मेरा दिल तो जीत लिया है। आई थिंक दिस गेम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम। ये बात अलग है कि हाँ गेम प्ले नहीं है, बट लाल सिंह चड्ढा से तो बेहतर ही होगी शायद। स्टोरी उसमें भी कुछ ऐसी है। लाल सिंह चड्ढा में भी फॉरेस्ट गंप जिन लोगों ने नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देखना। लाल सिंह चड्ढा से आई थिंक भूल जाओगे आप। उसमें भी स्टोरी भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला, अभी के हिसाब से पास्ट में होने वाली घटनाओं के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम लोग, अभी तक हम कॉलेज लाइफ जी रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अपना बचपन जी रहे हैं। हाल फिलहाल मैं तीनों को गिरा रहा हूँ, अजीब सी बात है। ठीक है, मैं अब इन दोनों को गिरा देता हूँ, ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। बात अब उठाना नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि इसने मार दिया। ठीक है, मैं अपने आप को आई थिंक अग्रेशन दिखा दिया है मैंने। जो बंदे पहले दो के सामने लड़ रहा था ना अकेले, उसने गिरा दिया है दोनों को।
स्टोरी कुछ अलग ही लेवल पे जा रही है, ये मेरे को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। मैंने तीनों को गिरा दिया है। ये चीज़ है ना, मेरे समझ में नहीं है। गो टू हॉल, इट विल गेट टू एवरीवन, दे विल सी हिम एज अ वीक। बाहर आवाज़ें चल रही हैं। ओके, जो पेरेंट्स हैं वो बाहर लड़ रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग अपना जो मतलब नींद, ऑब्वियस सी बात है कि नींद बिगड़ गई है यहाँ पर। ओके, अब मुझे एक चीज़ समझ में आई, ये सब तीनों तो एक दूसरे को ही मार रहे थे। बाहर से ऐसा नहीं लग रहा था यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, अभी मेरा ध्यान गया, ये चित्र देखो क्या है एक्चुअली में। ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, और ये इसको मार रहा है। मतलब अगर गोली चली तो ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। अच्छा, ये बच जाएगा तब तो। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। और मैं पता नहीं क्या वहाँ समय बिगाड़ रहा था, हकीकत तो यहाँ पर है भाई। दुनिया को एक्चुअली वो जो था ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम किया यहाँ पे हमारा। ओके, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है मेरे ख्याल से। DDU ठीक है, मैं जितना तेज़ हो रहा है घुमा रहा हूँ, बट नहीं ठीक है। इंडिया का नक्शा एक बार देख लेते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा देख के। कहाँ गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उसको बहुत बड़ा दिखाया। ये रहा हमारा इंडिया, और रशिया को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो पेरेंट्स की बाहर लड़ाई वड़ाई चल रही है कुछ हमारे लिए कि यार ये तो मतलब कमज़ोर हो गया है, क्या करेंगे बॉयज़ इसका। तो मदर बोल रही है कि यार कौन से बॉयज़, वो सब तो मतलब आते रहते हैं लाइफ में। देखो एक प्लेन भी मुझे अभी दिखाई दिया अचानक से, इसको लेते हैं। आई थिंक टच तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ओके, Good night, Pete. ओ मदर ने, ये मदर ही हैं। Sorry. और हम लोग यहाँ पर फिर एक बार अभी के सिचुएशन में आ गए। मैं लेटर पे बहुत नज़र जा रही है, बट ये लेटर एक्चुअली में कुछ नहीं है। तो इस कमरे से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ऑब्वियस बात है, कैमरा एंगल बदल गया है क्योंकि अभी हम पीछे आ गए हैं उस बिल्डिंग के, और ये दूसरी जो बिल्डिंग है ना ऊपर वाली, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर पहले नॉर्वे का राज था, जो हमको न्यूज़ मिली है उस हिसाब से, मैप के हिसाब से यहाँ नॉर्वे का कंट्री का रिसर्च सेंटर था। बट अभी जब हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि सोवियत जो रशिया है उसने अपना झंडा लगा दिया है, तो उनका राज है यहाँ पर। ओ हाँ, बदला है लेवल यार। Damn kettle's hot, that's all. Watch out. ये वही कॉटेज है जो इनके फादर का था। You all right? What's that? Oh, yes. Have you got the tea on? Water's boiling. Hope there's enough. Well, don't worry about me. Just make sure you have what you need. What are you talking about? Look, it's fine. Nothing. कुछ व्यवहार मुझे अलग लग Sure, रहा है, it क्यों doesn't ऐसा? Sound like nothing. कुछ तो है इसके मन में क्लारा के, बता नहीं रही है। Come in, Clara. Do you read me? Look, I'm sorry about last night. I didn't mean for you to have कह रहे हैं कि तुम्हें this सोफा पे सोना पड़ा रात को, उसके लिए सॉरी। Oh, don't mention it. मैं कह रहा मतलब It's a very comfy पीटर कह रहा है sofa. क्लारा को, क्लारा को सोना पड़ा है। I'm glad. I thought you'd be annoyed. It's not the same for us, is it? What do you mean? I know what most of the men at Cambridge are like. They can take home whoever they like and they can tell all their friends about it afterwards. Like, they just get a slap on the back and a well done, old chap. For यहाँ us, पर ये लोगों के बारे में बात it's कर रही हैं different. कि लोग ऐसे Don't होते keep हैं कि quiet about लड़कियों it को like मतलब Molly ले doesn't, जाते हैं then घर you पे। hurt a girl with a कॉलेज reputation. में बताया है यहाँ पे कि लड़के जो हैं वो ले जाते हैं और फिर
उसकी तारीफ करते हैं कि देखो मैं लेके आया Alright, था, look, उसके दोस्त it's उसको early. शाबाशी देते हैं, बट हाँ I'll get us इन some दोनों के बीच में breakfast, कुछ अलग है, shall I? ये वो बता रही हैं. That sounds nice. It didn't have anything to do with you. That's what I mean. I see, just men in general. All right. वो कह रही है तुम्हारे बारे में नहीं है, मैं सिर्फ मैं आदमियों के बारे में जनरल I इमेज suppose बता I've रही हूँ. had friends at school, girlfriends who play into this whole thing too, the whole parade of it. They didn't understand my interest in science. They thought I was a bit weird. You're not weird? Well, only in the right ways. Thank you. Sorry, I'm just in an odd frame of mind. I thought the work might help keep my head straight. I can take over this if you want to rest. No, I like it. I'm enjoying it, really. I want this to be good. That's one thing I definitely got from my father. It's perfectionism, for better or worse. Hard to live up to. Well, it's good to be ambitious, and what's this if it's not ambitious? Speaking of which, there's something I noticed. Show me. I've just looked at the latest batch of atmospheric radiation readings. ये भी Don't हमें worry, मदद कर रही हैं. everything seems to be Actually उसी moving के in बारे ways में we're बातचीत चल रही है यहाँ expecting. It's all consistent. It's just consistently ये भी हमारे higher, रिसर्च में too, साथ दे रही हैं. compared अच्छी to बात the ones है. we took a few months ago. He's got new equipment, maybe? That would explain why everything's jumped at once. Well, I'll double check everything again now. It's just something I noticed as I glanced over them. It'll be good for me to focus on something like this anyway. Get my head down. Just take care of yourself. Ah, don't worry about me. Look, why don't you look around? There's plenty of books to read. Oh. Why not? If you're sure. तो अब हमारा काम मतलब रिसर्च का काम में क्लैरा भी हमारी मदद कर रही हैं. कह रही कुछ किताबें पढ़ी हैं, जाके तुम किताबें क्यों नहीं पढ़ते. एक्चुअली मैं किताब ढूंढ रहा हूँ. हाँ देखिए पीछे है. पता नहीं क्यों ये कह रही थी. ओके हमारे पास दो ऑप्शन है इंटरेक्शन के. मैंने क्लिक किया इंटरेक्शन पे, बट ये तो कुछ और ही आ गया है. ओके ये हाइट है. ओके रॉबी, अच्छा रॉबी क्लारा, अच्छा इसके भाई और इनकी हाइट का मीटर दीवार पे निशान किया गया है. ओके ये समझा मैं. बाकी किताब पढ़ने को कहा था यहाँ पे. हैप्पी मदर्स डे. सॉरी ये दोनों भाई और बहन का जो बचपन था वो यहाँ पे गुजरा हुआ था, तो उसी का ही फ़ोटो, उसी के निशान यहाँ पे दीवारों पे लगे हुए हैं. जो लेटर्स हैं, जो ड्राइंग है, जो उनकी हाइट वाइट थी, वो सब है यहाँ पे. वो किताब हमारी फाइनली, अरे यार आ ही नहीं रही. आ गई. फाउंडेशन इंजीनियरिंग साइंस. ओके 1955 1953. अब इस कमरे में जो कुछ था हमें सब देख तो लिया है. म्यूज़िक बाकी था, वो लगा दिया. Oh, well, look at this. Oh, the whole thing. Feel free to put something on. Sorry, there's not a lot of choice. We didn't own much music. Is this one all right? Oh, it's wonderful. I love it. ये कह रही है हमारे पास म्यूज़िक तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है ऑप्शंस. You're right. I can't concentrate. हाँ मुझे लग ही रहा था काम नहीं Where's कर that पा रही tea? फोकस. चाय चाहिए इनको, रखी है पीछे. वो अजीब सा स्क्रीन देख के ही लग रहा है. ओह ये यार. You all right? My hand. It's hot. I said it was ओह hot. छू ली हाथ में यार. Sorry, I कहाँ wasn't ध्यान है listening. इसका. क्लैरा Hold it up gently. What are you doing? Helping. Putting something on this bandage. What? Honey. Honey? It helps, trust me. दादी का नुस्खा ट्राई कर रहे हैं. शहद लगा रहे हैं जले हुए पे. Yeah, show me your hand. Oh, how silly of me. There goes the tea. Is there something else, Clara? No, it's silly. Come on, I'm sure it's not. It's been a long time and I should be over it by now.
It's my brother. ओके लास्ट नाइट about इन्होंने him last सपना night. देखा था अपने भाई का. अब समझ में आया इनका मूड क्यों ऐसा ऑफ है. thought वही you भाई might जिसकी feel odd here, didn't दुर्घटना में you? मौत but हुई थी. it's strange. I feel guilty too. और इनको लग रहा है कि You don't इनका need भी to कहीं feel ना कहीं guilty. दोष है. I've पता been नहीं क्यों. forgetting him. That doesn't अच्छा make you उनको guilty. भूल of रही anything. थी कह रही कि now मेरी I'm here मैं again उनके and बारे here में he यादें is. मेरी कम हो रही थी And इसलिए मुझे everything I अफसोस look हो रहा at. था कि मैं क्यों उनको याद नहीं You don't करती need अब. to stay if it's too difficult. No, I'm happy I came. और ये I जगह भी should've वही done है it sooner. तो और यादें ताज़ा हो गई होंगी. I'll not impose all this on you. It makes me wonder if I'd be where I am today if he was still around. You know, Cambridge and the whole thing. Does that make me a terrible person? No, but I don't think I'd follow. You'd have been successful no matter what, wouldn't you? I love my father, you know. Your father. What's he got to do with it? I owe him everything. My interest in physics, engineering, maths, everything. He'd take me to all the museums, make little experiments with me in ये the बता रहे हैं कि shed. इनके फादर ने भी was बहुत an अच्छे engineer, तरीके से you इनको see. मतलब ग्रो अप किया When I है, was still बड़ा little, किया है. बचपन में म्यूजियम, before he जूज, really let इतनी me play सारी with बुक्स के anything, बीच में इनका बचपन my बीता brother है. got all that attention. And when he died, it all came to me. His वो कह रही हैं कि passions. शायद इनके ब्रदर अभी होते तो शायद ये ऐसी नहीं They all होती became mine. क्योंकि जो सारा टेंशन था 2 बच्चों में था वो बाद में इनके ऊपर हो गया पूरा. Great passions to have, I'd say. They are. I just और जो इसके भाई भी था wonder वो भी sometimes मतलब फुल पैशन वाला था तो whether उससे he'd भी be इसने सीखा. showing an interest in a girl if my brother hadn't, you know. I just would I have just been forgotten? Let me finish your hand here. And the worst of it is sometimes I feel, oh, it's horrible. I can't even say it. You don't have to say anything if you don't want to. Sometimes I feel grateful it happened. Otherwise, I wouldn't have got this chance. Isn't that awful? No. No, I understand. There. I should hold it. Thank you. Here. Do you think you could manage to hold on to me? और यहाँ पे जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, जादू की झप्पी दे दी यहाँ पे. हाँ ये करंट ने हमें क्या याद दिला दिया. ओके लाइट्स आर ऑन. यहाँ पर ऑब्वियस बात है वही रेडियो कंट्रोल रूम जो था ना वहीं आ चुके हैं. अब हम अपने दोस्त से कांटेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है. हम उसको बताएंगे कि हमारा भाई जो नॉर्वे वाला बेस था वहाँ पे सोवियत के झंडे लग गए हैं. जहाँ पे लाइट जलेगी ना. हाँ Floyd, can you hear me? Peter, you're safe. Where are you? You didn't run into any Soviets then? I'm guessing you found the Norwegians. Tell me they've got a doctor, mate. This leg is killing me. इनको बताना Floyd, पड़ेगा कि the सोवियत base का on झंडा land. है. It's not Norwegian. It's Soviet. Can you repeat that? हाँ उनको यकीन नहीं हो रहा This is है. a Soviet base. No. No, no, no. Wait, how are you getting this message out then? Have you been captured? No, I'm fine, Floyd. I don't think there's anyone here either. It's freezing. Everything was powered down. I think I just had to restart the generator again. I don't understand. Are we way off course? No, it makes no sense. You followed the map, right? I just followed my instincts. But there's another map here. Does it explain anything? उनको यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया. वो भाई हम बता रहे हैं कि एक और मैप यहाँ पे रखा गया है. लेट्स सी वो मैप में क्या है. ओके ये कौन सा मैप है. Can you see anything that might be the Norwegian base? Yes, I can see it. I हाँ can see the नॉर्वे flag. वाला है. और वो बता रहे थे कि But it's not nearby. मैंने Floyd. मैप फॉलो We नहीं were किया way यहाँ off. आने में. It's at least as far there as it is back to the British base. What's the terrain like? Is it a straight shot? It looks like it's between two mountains, on the other side of a bay. There's a ship marked on there too. Christ. Well, if there's a ship
the base is pretty well supplied. But there's something else on the map. Some area shaded out past the mountains. कुछ एरियाज पे देखो 2 माउंटेन्स आ रहे हैं नॉर्वे मैप, नॉर्वे के जाने तक पहले, और एक अजीब सा एरिया है Find some medicine for you. Bring it back to you. जिसको ग्रे आउट किया गया है, Peter, that पता नहीं makes क्या no है। sense. We'd still be stuck out here. I haven't been able to raise anyone on the radio. Our only इधर हमारा hope is दोस्त for भी you to कोई find a कांटेक्ट नहीं friend बना पा out रहा है। there. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कोई You आने need वाला help, है। Floyd. We don't have any option. Peter, I'll be honest with you. If you come back here now, we might not. ये कह रहे हैं कि अगर तुम रिटर्न होते हो तब भी हम बचने वाले नहीं हैं। I don't. It's better being there to help you. What if I run out of fuel on the way to the Norwegians? अब हम भी अपना बता रहे हैं कि भाई गाड़ी खत्म हो गई तो Get out. पेट्रोल, Walk, Peter. ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए आगे ही बढ़ते रहना, पैदल जाना फिर यहाँ पे। My nerves are shot just getting this far. Look, get it together. This is it. I don't like it any more than you do, but you're a grown man, Peter. If you don't do this, we're both done for. You hear me? हम भी थोड़े से निराश हैं भाई, क्योंकि हमारी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। उधर फ्लॉयड भी इंजर्ड है, तो फ्लॉयड कह रहा है कि नहीं भाई आगे बढ़ना ही है और कोई रास्ता नहीं है, रुकने का कोई मतलब नहीं है, वापस आने का भी कोई मतलब नहीं है। I'm here, all right? फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम और आगे बढ़ेंगे, नॉर्वे पे फिर से जाने की कोशिश करेंगे जो ये नए मैप के हिसाब से है। Now you know where you're going. I'm heading for those 2 mountains, and it's the other side of the bay past that. Right. And did you say there was a ship? Yes, a ship on the other side of the bay. Mountains, bay, ship. Say it back to me. माउंटेन्स, बे और शिप। Bay. Ship. Right you are. I'll save the flares for when you're on your way back, all right? Mate, we'll have a little party. वो कह रहे हैं कि तुम मदद लेकर आओ, फिर मैं फ्लैश चलाऊंगा, फिर हम लोग पार्टी करेंगे बाद में। लेट्स सी फ्लाइट का क्या होता है और हम आगे क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। Some of those beeps, maybe. You heard any of that? I didn't notice. I was searching for you. You think we should be worried? No idea what it is. कुछ अजीब सी बीप बीप आवाजें भी आ रही हैं रेडियो पे, बट हमने नहीं सुनी है, फ्लॉयड ने सुनी है। Good luck, mate. Good luck, Floyd. तो हम यहाँ से जाते हुए अब हमें हमारी गाड़ी पे ही जाना है, तभी हम मैप में आगे जा पाएंगे। स्टोरी फिर बदलती हुई, यही वो 2 माउंटेन है, इन्हीं के बीच से गाड़ी ले जानी है। स्क्रीन वाइट हो गया है, गाड़ी में बैठ चुके हैं और इस बार गाड़ी काफ़ी दूर से दिखाई दे रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब समझो ठीक है, रोड तो दिखना चालू हुआ ही है, बट मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। ओके अब दिखता हुआ 2 माउंटेन दिख गए, ठीक है, उनके सेंटर में जगह भी है, वहीं पे जाना है हमें। गाड़ी को क्या हुआ? अरे पेट्रोल I have to खत्म। admit, I'm a bit nervous getting into the ये passenger कौन है? side. Nervous? Why? अच्छा वो I've चलाएगी seen अब you गाड़ी। driving. Charming. You've been spending too much time with Joe, I'd say. Only joshing, old chap. ये हो क्या रहा है? एक बंदा आया है जो बैठ गया हमारे साथ गाड़ी में और Right, let's see if we can solve this. Cryptic one this time. 2 down, 8 letters, begins with U. Builder goes mad during door removal. फिर यहाँ पे कुछ गाड़ी में दिक्कत आ रही है। Unhinged? Ah, now I'm pleased I took the lift with you. Unhinged. You sure you wouldn't be happier in the English department? It's the only reason I buy these things now. Although, there was that one story I wanted to read. Can you believe it? About that Molly girl. चलो इस बार मुझे लग रहा है कुछ बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट्स वाइट्स भी आ चुकी हैं, मतलब कम से कम एक्टिव बेस तो होगा ही पक्का। Lucky you. देखो लाइट्स ऑन है शायद, पता नहीं अभी तो दिन का मौसम है, समझ नहीं आ रहा। Got taken away yesterday on campus. Caused a right stir outside college. Black cars blocking the road. Plainclothes police, or so it looked. Photographs here on page 2.
ठीक है, मॉली को आई थिंक ले गए क्या पुलिस वाले? I know her. She's the one that wears the red jacket. Well, I don't know about that. This one could be red. Bit of a giveaway if it was. But you know her. Well, I've met her. Good lord. You're not mixed up in all this, are you? I don't know what all this is. Can you read it? Well, it says here she's rumoured to have links with the Communist Party of the Soviet ठीक है, यहाँ Union. पर सोवियत यूनियन के साथ उसके लिंक होना पता लगा है Miss मॉली का। Shanahan, lecturer at Newhall College, Cambridge, was known to be associated with the CND एंटी-न्यूक्लियर जो and other weapons हैं, anti-nuclear ऑर्गेनाइजेशन, weapons उसके साथ organizations, संबंध पाए गए, all of सोवियत which के have साथ come under मतलब। suspicion since the marches on Whitehall earlier this year. She has been charged with handling data sensitive to Her Majesty's government and passing that data to contacts in Moscow. इंफॉर्मेशन लीक करने के का It's gonna make आरोप the लगा professor है। jumpy. Not the reason he wanted the university in the papers. Questions remain over whether she was working alone and how the university deal with the fallout. The same as usual, I suppose. Just अब carry on. मैंने बोल तो दिया मैं उसको जानता हूँ, बट इसमें आया है न्यूज़ Molly में and कि और Clara कौन were लोग good थे उसके friends. साथ। Hope this मॉरी और won't come back क्लारा on गुड her. फ्रेंड्स So थे। ओ Clara's that friend you mentioned then. भाई क्लारा She भी is. फंसती हुई, आई थिंक शी विल बी She'll be worried worried sick। sick. Look, despite all this newspaper talk, it's only questioning. I wouldn't get too worked up about it. You seem very calm about all this. Well, of course, I hate to see it, but you know, nothing to do with us, old It chap. is when you know someone who's involved. It'll blow over soon, I'm sure. I wouldn't be so sure. What if this is just the start? All right, then. Let's take another look at this one. 4 across, 9 letters, begins हाँ, with एक और T. पजल मार दी मुंह पे हमारे। Oh. This is what I am when you're driving. Rhymes with verified. Okay, I get the message. Just going to write that one down, if I should live long enough. No, keep गई going. गाड़ी गई, गाड़ी गई, No. गाड़ी गई, धक्का लग Come रहा on. है। Keep going a bit further. No! Damn it! गाड़ी में पेट्रोल खत्म। पैदल सफर तय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ठंडी की है। अभी तो फिर भी ठीक है कि सूरज है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत राहत है, बट अभी देखना है मैं चलूँगा कैसे वहाँ से वहाँ तक, क्योंकि अभी ये रुक गए हैं पूरी तरह से। ठीक है, कुछ क्लिक करने पे कुछ हुआ तो है। अच्छा, मैं क्लिक से भी चला सकता हूँ क्या? ठीक है, स्क्रीन वाइट हो गया। आई थिंक हम लोग पीछे जाएंगे अब कहानी में। This is really state-of-the-art technology. It weighs a ton. ओह, माउंटेनिंग, क्या I can हाइकिंग, carry हाइकिंग it. के लिए गए हैं Sorry, ये लोग। और क्या wasn't लग रहा है thinking. यार ये No, सीन, no, I said I'd help. ना कूल। It's just what I could cobble together with a meager budget. I just wanted to make sure that if I was carrying the kitchen sink, it was a scientifically useful kitchen sink. I've been meaning to tell you, I heard from Molly just before we left. Molly? What's happened? Well, it's been awful. As you'd ठीक है, बात expect. उसी बारे में हो रही है, मॉली के Arrested and अरेस्ट के बारे में, questioned और like उससे that for सवाल so पूछे जा long. रहे हैं बहुत लंबे She समय से। sounded a bit shaken. Didn't sound like her at all. So is she still under arrest? Well, that's what she was calling about. She was being released without charge. Oh, well that's a relief. उसको छोड़ दिया गया है, Well, ओके, it's बिना better किसी than her आरोप still के। being locked up, that's for certain, but something was a little off about it. You suspect something's going on? Foul play? Something must be going on. वो कह रही है क्लारा कि कुछ तो Can't put गड़बड़ my है, क्योंकि finger उसका on it. व्यवहार वो अलग She हो गई wasn't है being एकदम very से। clear. She wasn't sure if she wants to come back to college. I don't know वो when तो I'll कोई see भी हो her जाए यार, again. किसी पे देशद्रोही का आरोप लग जाए। फॉर एग्जांपल रॉकेटरी I'm मूवी sure है she'll भाई, be back. उसके बाद नंबी नारायण जी ने जो Just- किया है वो सब होने के I hope it बावजूद भी doesn't ruin गजब कहलाए वो। things. Her academic career, everything, you know. So many people think that where there's smoke, there's fire. It's bloody unfair. You don't know she's not coming back. No, but I know there are people who'd much rather she didn't. I wouldn't like to be in her shoes, that's for sure. This Cold War suddenly feels a bit real, doesn't it? जैसे ही बात की कोल्ड वॉर एकदम रियल लग रहा है, स्टोरी चेंज, और क्या स्क्रीनशॉट आते हुए
बीच बीच में आपको क्लिक करने की आवाज़ आ रही होगी, वो एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ जो अच्छे अच्छे सीन्स हैं। नहीं, वॉलपेपर भी बन सकते हैं, ये इतने अच्छे फ़ोटोज़ हैं इस गेम में। चला ना आपको ये देखो भाई, ये गेम में एटलीस्ट जब प्लेयर मूव करता है ना तो उसका मूवमेंट आपके पास ही रहता है। तो दो माउंटेन, अरे ये फिर एक माउंटेन में आ गए हम लोग। बर्फीले माउंटेन से ये ग्रीनरी वाला माउंटेन है। कनेक्ट तो बहुत सही ढंग से किया है, मतलब हम किसी कमरे में जा रहे हैं जो हमारे बचपन की याद दिला रहा है, तो फिर Go for it. हाँ, बलून उड़ाते हुए। I'll never tire of doing that. Taken all your readings? I've just completed mine for the day. Oh, that was quick. Oh, well, you know me. Ready for the walk back? Absolutely. अब ये जो रीडिंग है ना, ये क्लाउड को रीडिंग करने के लिए भेजा है यहाँ पे। हाँ, कहाँ जाएगा वो? There's something I want you to see first. Sounds intriguing. क्योंकि बादल भी तो हवाओं से ही ट्रैवल करते हैं। Fancy we climb? You can make it up there. I can. Can you? Come on. हाँ, पूछ रहे इतना ऊपर चढ़ पाओगी? Here, put one hand here, it'll help you up. If I can do this as a girl, I can do it again now. Your कह रही parents लड़की allowed बन you के to मैं कर climb सकती हूँ this? तो They फिर didn't know. My brother तुमसे तो took हो ही me. जाएगा। यस, हमसे हो गया है। Those readings, Peter. I've been wanting to talk to you about them. Are they consistent with what they've been reporting in South America? They're not as high, but they're high. Oh, your equations still work. It doesn't disprove the model. We can still plot the paths of the air currents. But still, something's not right. जो रीडिंग्स मिली हैं उसके बारे में श्योर नहीं है। इनके मन में ये भी डाउट है कि शायद और ऊंचा अगर रहता है रीडिंग्स, मतलब जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर उसको और ऊंचाई पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट लेट्स सी, अभी जो भी रीडिंग्स आई हैं उससे पूरी तरह से खुश नहीं है। बहुत आगे भाग गए यार। उई, चील। Keep down. पहाड़ों पे होते हैं भाई, गिद्ध भी होते हैं। White-tailed eagle. Haven't seen one in White years. tailored, okay. Look at the power of it. It's caught something. This is special. I thought they were extinct, poisoned by pesticides. She's come out just for us. New life, eh? उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। Oh. Wonder if we'll see anything like that again. Wonder where it came from. It makes me think, where did it come from? I mean, the extra radiation. Where did that come from? Are you sure it's not a quirk of all this new equipment? हाँ, गेम कभी कभी बहुत खामोश हो जाता है, बट जब गेम खामोश होता है तो स्क्रीन देखने लायक भी होती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बोर ही हो जाओगे आप। और स्टोरी बिल्डअप हो रही है भाई, तो फिर आप कंप्लेन भी नहीं कर All सकते the इस मामले में। instruments can't be giving inflated readings. Oh, come on, take my hand. There you go. Right. Right. Let's try and work it out. All right, so what do we know? We know the readings are at their highest down in the southern hemisphere. And not as high here, up north. Right. It's being diluted somehow, is my thinking. Mixed in by all the currents. That would make sense. Well, it's heading from the south up to the north.
Yes. बाप रे क्या गजब के सीन है। हाँ थोड़ा बहुत ग्लिच हो जा रहा है बट फिर भी हाँ ऊंचाई पे पहुंच गया। नो डाउट ये सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है बट फिर भी हम जहाँ भी हैं Your model of the air बहुत currents. खूबसूरत है। That would prove that's what's happening, that there's this general movement north. I think we need to find out where this radiation came from in the first place. We've been running the model forwards all this time, but our starting point has always been South America. I could look again at the model, perhaps. Run it differently, you mean? Run it backwards. See where these air currents originate. The radiation has to be coming from somewhere. Somewhere further south. South of the Antarctic Circle, maybe? I don't know. Whatever this is, people are going to want to hear about it. I think you might be right. I think we might be onto something. ओके और ऊंचा जा रहे हैं। नहीं नहीं नीचे जा रहे हैं ऊंचा जा रहे हैं। अरे और ऊंचा जा रहे हैं ये लोग। अरे This is bigger गजब than just भाई। clouds, you mean? Bigger than clouds! Although I know you can't believe such a thing. Ah, I might, given the chance. It might be what this paper's meant to be about. हमसे तेज ही चढ़ रही है लेकिन ये तो मैं मानूंगा। आप कभी भी देखना मैं कहीं ना कहीं थोड़ा तो धीरे पड़ जा रहा हूँ उनसे, क्लारा से। हाँ क्लाउड्स। Look at this. हो क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। Hey, hold on. हाँ वो भाग रही हैं। थोड़ा ऊपर हो जाओ भाई नहीं तो गिरोगे Just wanna कॉर्नर get पे a bit चलोगे higher. I know तो। और it's ऊपर spot. जाना चाहती हैं। अरे बाप रे कह रही कि मुझे पता है स्पॉट कहाँ पे। आई थिंक ये ग्लिच कर गया क्या पानी। ये बनाया ही पगल अलग है। पता नहीं क्या पानी है Windy कि क्या up है। here. Are you cold? और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही ओ Cold. देखो बात भी कर रहा हूँ मैं तो। कोल्ड very द high वेरी pitch. आइडिया। हम अभी आ गए करंट सिचुएशन पे जहाँ अंटार्कटिका में हम लोग हैं। ओए फिर चेंज। ये पिंक वाला मेरे ख्याल से बग है। यहाँ पे आई थिंक कुछ और कलर आना चाहिए था इसीलिए पिंक कलर है। जनरली गेम डेवलपमेंट में पिंक कलर का यूज़ होता है फिर उसके ऊपर वो लोग दूसरा कलर डाल देते हैं। आई थिंक घास है तो ग्रीन कलर भी हो सकता है। सीधी सी बात है। It's beautiful, isn't it? बट इस पिंक कलर ने बैकग्राउंड बिगाड़ दिया थोड़ा सा। It's a beautiful view. Huh. It would be a beautiful thing. It would be. If you wanted to do it. It would change the whole focus of the paper. You might be needing some help. Would you like to help me with it? Writing it? Well, of course. It could be that beautiful subject I was talking about. Oh, so now it's yours, is it? Of course not. It could be ours, though. This beautiful thing. If you wanted it to be. Come here. भाई तो थोड़ी सी लव स्टोरियाँ यहाँ पे बनती हुई। यहाँ पर थोड़ी सी लव स्टोरियाँ बन चुकी हैं यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो। अच्छा मौसम था। क्लारा और पीटर यहाँ पर आई थिंक एक नई टर्न लाते हुए अपनी लाइफ में। हो सकता है आगे मैरिज भी हो पता नहीं। I knew it wouldn't last. बट यहाँ पर तो प्यार दिखता हुआ। What? The rain. बारिश भी चालू। Think we could make it to those trees down there? If we run. Here it comes. If it hits us, you could take my jacket. Promise me that? Promise you that. Let's go then.
ये पिंक वाला बग ही है पक्का, वो ग्रीन होना चाहिए था। और अच्छा हुआ कि बर्फ वाला एनिमेशन नहीं आ रहा, वहाँ पे बहुत कुछ स्लो है, यहाँ पे तो फिर भी एटलीस्ट थोड़ा फास्ट है। ये देखिए होए खेल रही है। I know another way around. Don't worry. We'll get less wet. और ये ढलान है इसलिए फुल स्पीड से भाग रहे हैं ये लोग। अरे बहुत मजा आता है भाई, बट जब तक बैलेंस में है तब तक बहुत तेज हो जाती है तो फिर गए। Yes, it's great. It's great, really. Finally. अच्छा लगा देख के इनको स्प्रिंट करते हुए देख के, मैं बोल ही रहा था अरे फिर शांत, अबे वो तो कर रही है स्प्रिंट, हाँ बहुत तेजी से निकल गई। थक गए बहुत बुरी तरह से। गायब, क्लारा गायब आगे से, उसी को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर गर्दन वर्दन घुमा रहे हैं, बट दिखे तब ना। अंटार्कटिका पहुंच चुके हैं, लेकिन अब देखना, हाँ मुझे पता था कुछ ना कुछ। अरे ये तो फन फेयर लिखा है यहाँ पे। अंटार्कटिका में कौन फन फेयर करेगा यार? अरे मतलब लोग वहाँ रहते भी होंगे तो कितने रहते होंगे, 5, 50, 100 लोग रहते होंगे, उनको झूला झूलने का कब मिलता होगा यार मौका, इतना अच्छे झूले। ओए फिर बदल गया सब कुछ। It's so much better at night, don't you think? Oh, it's beautiful. I saw them setting up this afternoon. It was all chaos and scaffolding, but now it's more, I don't know, exciting, I suppose. Not just all that. This. You realize this is a big occasion, don't you? It's the first time you've taken me out, Dr. Hamilton. No. At night, in public. Not working, not hiding a wee anywhere. We're out courting. सम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों। और आई थिंक यहाँ पे छोटी गेम आ रही है, क्या मजा आएगा अगर छोटी गेम्स आती हैं तो। Go on then, boys and their toys. Watch this. Shooting time. Good grief, what are you doing? As you said, courting. Are you now? ठीक है 10 शॉट्स हैं, लेट्स सी कितना हिट कर पाते हैं। I think this one's more for him. Not many men can do what I'm about to do. And you have good aim, do you, my knight in shining armor? Absolutely. 10 शॉट 10 कैंस गिरा दिए तो भैया गेम आपका। Well, I बियर फ्री में मिलेगा। I'd be good in the army. If only books hadn't gotten in the way. Go on then, prove yourself, army man. हो दबा 1। Well now, maybe I had you all wrong. भाई ये तो दिक्कत वाला है थोड़ा ज़्यादा नहीं। अरे दिक्कत इस बात की नहीं है, ठीक है You really don't need to prove anything. ओह ये क्या है? अरे अरे भाई नहीं समझ, हाँ ओके मुझे सबको उड़ाना है, मतलब हम बचपन में पहुंच गए भाई पूरा। मुझे लाल सिंह चड्ढा की क्यों याद आ रही है, वो भी ऐसे चड्ढा पहन के, मतलब वो चड्ढा के कारण चड्ढा नहीं, उसमें भी वो हाफ पैंट पहना हुआ उनका बचपन है। फॉरेस्ट गंप में भी हाफ पैंट पहना हुआ बचपन है, उसमें भी बचपन थोड़ा अलग तरीके से बीता है, इसमें भी बचपन थोड़ा सा अलग तरीके से बीता हुआ नजर आ रहा है। और ये क्या हिल रहा है बाजू में? मिस टीम कह रहा है, कहाँ मिस क्या है? That's enough I think. What's the matter, Peter? अच्छा इसको याद आ गया पुराना दिन। Clara? क्लारा गायब, पता नहीं कैसे।
हाँ मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। अब सब चीज़ें कुछ ऐसी लग नहीं रही अलग से कि मैं उसको देख के मेरे को उधर जाने का मन करे, सब एक जैसा ही लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये शॉप्स हैं, जा भी नहीं पा रहा मैं अंदर, तो मतलब भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। बेहतर है कि हमने एक रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट फॉलो करते हैं। रेड पाथ आ रहा है एक्चुअली, जो अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। ओके ये क्या चीज़ है? हॉन्टेड हाउस। कपड़ा भी बदल गया, अभी वाला कपड़ा आ गया है क्या? ये मतलब ये है कि हम किसी बंकर में जा रहे हैं क्या? लेट्स फाइंड इट आउट। ओह इस पे तो भाई वो न्यूक्लियर वाला साइन है, नो रेडिएशन, नो रेडिएशन। अच्छा नो, ठीक है, एक्चुअली रेडिएशन का साइन है, नो रेडिएशन नहीं। उसने बोला अरे नहीं रेडिएशन साइन, ऐसा बोला उसने। फिर फंस गए भाई, फिर भाग रहे हैं वहाँ से। और जी हाँ यहाँ पे कोल्ड माहौल आ चुका है, वो झूला झाला गया, भागते हुए हम लोग। झूला है भी नहीं यहाँ पर, एक्चुअली में फैक्ट्री है। वो झूले जैसी याद दिलाई थी बट झूला नहीं है ये एरिया रेडिएशन लिखा आया है यहाँ पे, पैरों के निशान है ज़मीन पे कुछ, एकदम स्नेक स्टाइल से, स्नेक जैसे। और जो फन फेयर था ना, वो फन फेयर नहीं है, ये सीसीपी है, ट्रिपल सीपी, सीसीसी और पी। हाँ एक दरवाज़ा खुला है, चलो अच्छी बात है। मुझे एक बात अच्छी लगी इस गेम में, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं हो रहा, मतलब सिंपल स्टोरी है, लीनियर है। स्टोरी तो अच्छी है ही, कुछ अलग ही जा रही है, आप समझ ही रहे हैं, बट हैरान नहीं किया यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर रहे हैं, आई थिंक वही नोटिफिकेशन देने वाले हैं उनको हम कि भाई यहाँ पे तो रेडिएशन फैल रहा है, आई थिंक इसीलिए लोग भाग गए थे क्या? Not yet, Floyd, I'm sorry. There was barely any fuel. I've walked all this way. Are you all right, Peter? Where are you? I'm alive. I'm just very cold. I don't know what this place is. It wasn't on the map. Another base. Lots of big machines. Another base? ठीक है, एक और बेस जो मैप में नहीं था, कोई प्लेग पर नहीं है। There were lots. ये क्या कह रहा है? ये क्या बात करने लगा क्लैरा के बारे में कि फन फेयर में बहुत सारे लोग थे। What the hell? Mate, are you keeping it together? Yeah, no, there was no one. Just, No one. Just a mine, a radioactive symbol. A mine? God, where the hell are we? Can you see anything else? Floyd, I can see the ship at last. अच्छा हाँ, Mountains, बेस शिप। अरे ये तो ship, like we said. ये तो वही है जो उसने रिपीट किया था, माउंटेन बेस शिप। You can see the Norwegian ship? I can. Norwegian I ship. can see it on the far side of the water. And there's a boat, a small boat on this side. Okay, so that's something. Do you think you can use it to get across? मैं ये ऐसे ही कहूँगा, और क्या। It might just kill me, but what else ना can I कहूँगा do? तब भी मुझे लगता है वो घूम फिर के मेरे को करवाने ही वाला And है। that'll kill you too. You don't want to give up हाँ, this close देखा। to the finish line. I'm counting. Don't want to give up this close. We're going to die out here. Peter, please listen to me. You know where you are now. This is the last push. You've made it this far. I know you can do it. Hello? I'm here. I काफी can do निराश it. हो गए भाई हम लोग, बट मेरे पास ऑप्शन था और निराश होने का, बट मैं और निराश नहीं हो सकता। No. If you hang around, we've got a problem, mate. There's a storm Oh, coming there's your a storm way. coming your way. I know because I'm in the thick of it now. अरे बाप You don't want रे। to get caught out on the water when the river hits. Look, I know you're tired, Peter. But if
you don't get moving now, you'll never cross the water. Who knows when the storm will clear? You've got to leave now. It's all I've got, Floyd. You know that. I'm giving it everything. You have to. Please, Peter. I don't want to die here. All right. All right. All right. Are you ready? एक और नया Yes. एडवेंचर होने वाला है Yes. यहाँ पे. I'm ready. Go on, mate. Go. Get out of there. Go on. फ्लॉयड की हालत भी बहुत ख़राब है यार. अभी नाव पकड़ के हम लोग वो बड़ी शिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं. Peter, Game फिर से change. good to see you at last. वो दो दोस्त You फिर look से मिल well. गए हैं. We were just talking about you, old chap. Here, got the first round in to celebrate. Celebrate? Heard the paper's going shockingly well at last. No need to be too shocked. John, your eminent professor, mentioned it. Gather you showed him an early copy. Word spreads when something's good, that's all. Never seen the man so delighted. So, I propose a toast. To Peter. To Peter. To me? May this be one foot inside the club. So all in all, I hear it's been a very productive summer. Got everything you wanted in Scotland. It's an inspiring place, yes. Very beautiful. Oh, she is. She is. ये लोग What are you talking about? क्लारा My के बारे में hands are बात clean. करने लगे हैं. I just mentioned Clara. That was it. Clara, good man, Peter. Like I said, inspiration. Sorry, shouldn't I have said anything? Oh, of course not. It's not a secret. She's been helping. Helping. Bit of note-taking here and there, filing. She's been doing more than that. Oh, I'm sure she has. Oh, I thought it was more, assisting than writing. No, she's done a lot on it now. Changed the focus of it a little too. Oh, I see. So wouldn't that make it a joint paper? Sam, I think we all know that Peter is the real professor in waiting here. I think he knows better than anyone how much he put into it and who wrote what. Isn't that right, Peter? मजा ले रहे हैं He's well दोस्त. aware his chances of promotion would be considerably lower if he'd only done half the work in collaboration. Of course I'm aware. Of course. Fine. Collaboration isn't a bad thing. No, I agree. Unless, of course, you're that girl Molly, collaborating with the communists. I think the word you're looking for is collusion. Well, didn't work out too well for her either way. Shame, really. I'd have happily colluded with her. Joe. Ah, you're right. You're right. Too complicated. I prefer things with fewer strings attached. Having the KGB and MI5 watching through the curtains, that would really put me off. Molly didn't deserve all that. I wonder what's happened to her. Well, she hasn't come back for the start of term yet, apparently. Beyond that, who knows? A vanishing lecturer. Doesn't that worry you? Not especially. You're not worried, are you? जो मौली है जिस पे आरोप लगा था वो आई नहीं पूरे टर्म Not में anymore. पढ़ाने के लिए. Thanks to Sam. Sorry, old chap. It's all water कॉलेज under में the नहीं आई bridge. है वो. New term, things will have settled down. Fresh start and all that. My thoughts exactly. New term, new students. Speaking of which, ये लोग नई उम्मीद लगा What do के you think of बैठेंगे. those नया two टर्म आएगा. Them? नए स्टूडेंट्स भी आएंगे. Very nice. I'm चीजें sure. थोड़ी बहुत बदलेंगी. Very nice. hold this, will you? Are you leaving us? Don't be so possessive, Peter. What are you, the wife? Like you जल्दी said, जा रहे Sam, हैं तो कह रहे never वाइफ too बन late गए for हो a fresh क्या? start. I meant what I said. Hearty congratulations on the paper. You always had that passion, much more than the rest of us. And this sounds like that old conundrum, women or work. Just don't forget your years of struggle. Don't miss this opportunity. Wouldn't want you missing out on what you deserve. Thank you. Right. I'm off to get what I deserve. Don't wait up, chaps. You're a disgrace, Joe. Absolutely shocking. He keeps doing that, doesn't he? How does he keep doing it and getting away with it?
Should head in the bloody clouds again. That's your problem. Pick up the oars and row like I told you. Faster than that, son. तो नाव का जो सफर था वो पूरा करते करते हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं. Yeah, that's what I'm afraid of. Do you want to help? No, this is a test of your listening, son, and trying to work things out for yourself. और एक्चुअली में ये हमारे फादर हैं जो सामने बैठे हैं ना, वो हमारे फादर हैं. Just take an oar, maybe. Well, say I did, and you could only work one oar. Then where would we be? We'd be going round in circles. अगर एक हाथ चलाएंगे तो सर्कल में घूमते रह जाएंगे. There's a strong current coming up. It's a good test, son. Now remember what I taught you. Okay, मुझे चलाना है क्या इनको? Keep us straight and true. भाई हो सकता है. Strong arms. नहीं. I said strong. No, 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 no. Shh. Trying. That side, harder on the port side. Help! Jesus, Pete, that one. भाई ऐसे कौन सिखाता है भाई? यहाँ पे सफर चालू हो चुका है हमारा. अरे लेकिन एक चीज है, आगे तो मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बट तो मुझे ये बताओ कि Give it here. Give it here. Go, you get back there. I'll do it. ओके अब ये चलाएंगे. मतलब वहाँ पर भी हम इन्हीं की बदौलत पहुँचेंगे. ये देखिए अब मैं भी ऐसे ही कर रहा था. I knew you weren't made for this. भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को हर बात में नीचा दिखाते हैं कुछ लोग. ये भी वही कर रहे हैं और ये हमेशा मन में रह जाता है बच्चों के कि यार हम कम हैं. Come on. Prove you can go the rest of the way. Current's not as strong now. Here you go. जो हार्ड चीज़ थी, हार्ड जो पानी का प्रवाह था, उसको इन्होंने पार करवा दिया. अब बोला एटलीस्ट अब स्लो में तो तुम चला लो. I have done my best, Peter. Whatever you do in life, you can't expect anyone to do things for you. My experience. I won't always be here to help. बात तो सही है. And there'll come a time when you've got to prove you can do something by yourself. हाँ आ गया है टाइम. यहाँ पे हमें अपने आप को प्रूव करना है. ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पर भी. ओए ये यहाँ क्या कर रही है क्लैरा? Good row, Captain Hamilton. Oh, get me away from this thing. फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट. अच्छा ये हम फिर उस जगह पे पहुंच गए और अब हमारा फिर जवानी वाला टाइम का आ गया जब हम नाव चलाकर पहुंचे थे क्लारा से मिलने. It's very nasty ripples. It's practically a storm surge. I think if the wind had been in another direction. Oh, come here. Easy होता. Don't you know me at all by now? Come on, let's walk. All right. Thank you. Well, I've got used to being this relaxed. What's it going to be like getting back to college, having to smarten ourselves up? I really like you like this. It's nice. Remember when we met on that train and you were so self-conscious about your shoes? अरे हाँ मैंने शूज का ऑप्शन चुना था. सही है यार, गेम ने याद रखा है. शायद कुछ और चुनता तो कुछ और जवाब आता. हाँ सूटकेस. I remember you struggling with the suitcase. Yes, सूटकेस से काफी स्ट्रगल कर रही थी. So, do you want the good news? अरे कुछ गुड न्यूज़ है. Absolutely. क्या While है? you're out, I checked with the hotel and they said we could stay another night. And I thought, why not? Extend this holiday as long as we can. Extend the celebration. Celebration? Oh, you know, the summer of work. The fact that it's practically all done now. And perhaps we could celebrate us too. Us? Yeah, absolutely. Absolutely. Mr. Absolutely Hamilton. Oh, stop it. I don't say it like that. You do, and that's fine. Ready to go home soon?
Not in the slightest. Oh, so pretty. Oh, look at these houses. Oh, if I had found someone I could row with, perhaps I could be living here. Hey, I can row. Well, that's good. ये कह रही कोई नाव चलाने वाला मिल जाए तो मैं यहीं रह जाऊं. In love. Oh, those two houses up on the cliff, look. Oh, which one should we have, the red or the blue? It's tricky. Why not both? Oh, go on, pick one. ठीक है ब्लू या रेड भाई. ठीक है मैं रेड के साथ जा रहा हूँ. Okay. आप लोग होते तो क्या चुनते यार, ब्लू की My रेड. choice exactly. Oh. तो ये मेरे चॉइसेस हैं. मैंने कहाँ क्या चुना है वो देखिए ऊपर, वो इकट्ठा होता जा रहा है. और इस गेम का एंड उसी हिसाब से होगा. हो सकता है आपने कुछ और चुनाओ. A dog? Why not? ये क्या चुन लिया? A little someone else to play with it, perhaps? What about your work? Wouldn't you want to finish that first? Well, finish work before I settle down, you mean? Yes. Yeah, I love my work. You know I do. I'm not going to finish it. I'm going to keep going as long as I can. I don't see why it has to be one or the other. Would you give up work to have children? I would. I really would. No, well, I think the thing is, I wouldn't expect a man to give it all up. Not if he really loved his work. So why does the rest of the world think that we should give it all up? I keep thinking about all these bright young भाई women in teaching. राइट साइड में जो चिड़िया उड़ रही हैं वो देखिए आप. Scared that despite all they've achieved, despite the fact that they're walking out into the world with a degree from Cambridge, the first thing they'll be asked is how fast can you type? You're probably right. It's a real waste of talent. It really is a waste, you're right. Even the jobs they get, they're not expected to keep once they've had children. All it needs is people to stand up to it. No, you're right. I think women have every right to stake their claim. Not a woman this time. Women have been making a stand, throwing themselves under horses since the suffragettes. We need men to start fighting for it. You can count on me. I hope you do make a stand. Won't become part of all that. It's not easy, you know. A lot of people are still living in the dark ages about all this. Your professor, for one, I'll bet. I think you're probably right there. He doesn't know about any of this, does he? This work? Exactly. The work we've done. You will tell him, won't you? Of course I will. I'll go straight to his office as soon as बात we're हो रही है back. वो सर की, जो हमारे प्रोफेसर थे ना. प्रोफेसर को तो पता नहीं है कि हमने भाई मिल के काम किया है, कोलैबोरेशन में काम किया है. ठीक है, मैंने वादा तो किया है क्लारा से कि मैं उनको बता दूंगा सब, मतलब कि This is good, isn't it? किस तरह से काम हुआ है, क्या है. It is. वादा भी किया है तो अब निभाएंगे भी. एकदम स्मूथ पूरा ट्रांजिशन है पूरा स्टोरी का. ये देखिए एकदम से चेंज कर दिया. आइस पे आ गए हम लोग. Peter, Okay. marvelous to see you. Do Huh. come in. Take a seat. प्रोफेसर आ गए. I have to उठ say, के सामने से वेलकम किया भाई यहाँ पे. You read the final draft? of course, all the salient points. I must say, काफी it's खुश very हैं, काफी खुश हैं. Not at all. It's your work. I think the direction you took it gave it something of real value. Well, as I say, quite apart from the climate side of things, the method you developed to track radiation, I can see it having far-reaching implications, and not just कह रहे हैं कि in तुमने your रेडिएशन own पे भी जो field. काम किया है वो सिर्फ तुम्हारे एरिया में नहीं और भी बहुत सारे एरियाज में काम आने वाला है. I'm glad you think so. Yeah, first-rate piece of work. First-rate. This other name on here, Dr. Clara. ठीक है, उनका नाम दिया है यहाँ पे. कह रहे हैं कि नाम रिमूव करना पड़ेगा. अरे भाई 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 ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली. मैं अभी ना के साथ जा रहा हूँ. I understand you probably अरे had बाप रे. some little research assistance, but कह रही कि क्लारा का नाम निकालना पड़ेगा. ऐसे भी हम सबकी लाइफ में We मतलब just काम में usually put सेक्रेटरीज the तो name होती on हैं. the front हाँ cover हाँ of the हंसते हुए.
What are you suggesting? Tell me, have you seen your friend Joseph recently, Samuel? I have. Doing so well in their new positions. I would dearly love to see the same for you. And more for you. Well, thank you. ठीक है, हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बट कुछ कीमत देनी पड़ेगी, I think. Especially after the risk. Risk? A boy from a grammar school, first in his family to make it to university, you know what I'm saying. It's been really wonderful to give you this opportunity. I would just hate you to throw it away by misattributing your own hard work. It's for whatever reasons you have. Throwing it away? What do you mean? I mean, there is a world of possibility out there for you. भाई साहब क्यों नहीं बोल रहा ये? Well, as I say, it really is very good, and I'm not the only one who thinks so. You've given it to someone else already. I knew a few. कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो तुमने किसी और को दे दिया? I thought you'd be pleased. In fact, I think you might want to prepare yourself for being the center of attention for a little while. I'm sure you would be able to cope, but I think it's perhaps not quite the sort of thing you'd like to foist on a young woman, should I? Whatever it is, I'm sure Clara could handle it. कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में तुम सेंटर अटेंशन में होंगे, बट मुझे लगता नहीं कि वो औरत क्लारा संभाल पाएगी यहाँ पे. बट कह रहा है कि अगर औरत का नाम लगा रहेगा तो तकलीफ हो सकती है. हाँ, मैंने कहा है कि मैं भी संभाल पाऊंगा, क्लारा भी संभाल पाएगी यहाँ पे. अब ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तुम्हारी और क्लारा की नहीं है, सारी दुनिया को तकलीफ रहना पड़ेगी. क्लारा मौली के काफ़ी करीब थी. She wasn't charged. How close they were is the real question. Clara joined Molly on that anti-British protest march, I hear. People are saying Clara's a spy now. ओके, क्लारा पे स्पाई होने की बातें चल रही हैं. हो. अभी किसी ने सर्च करना शुरू नहीं किया, बट बातें हैं आपस में लोगों की. और कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को शक होने वाला है तुम्हारे ऊपर अगर तुम क्लारा का नाम लगा दोगे इसमें. जैसे कि इस कॉलेज को जो लोग फंड करते हैं वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी गुस्से होंगे. इनके पिताजी ने भी यूनिवर्सिटी से कॉल किया था. भाई ये काफ़ी है, बट मैं नेगेटिविटी के साथ ज़्यादा जाना चाहूँगा. मैं बहुत कंफ्यूजन है यार. हाँ, कह रहे हैं कि हम पुरानी चीज़ों को तो नहीं बदल सकते जो मौली के साथ हुआ है, बट आने वाले वक्त के लिए सावधान रह सकते हैं. बट मैं तो भाई इतना बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ भाई. उसको क्रेडिट दूँ कि ना दूँ. अभी तो मैं देने के मूड में हूँ. बाकी लेट्स सी और क्या क्या कहते हैं यहाँ पे. I see. मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उसका नाम होना तो चाहिए सर. भाई गुस्सा आ गया ये तो. This is precisely the way the rod sets in. It's the slow knife. Members of this university were recruited to spy for the Soviet Union 10 years ago. Now members of this university are demanding we lay down our weapons. The only defense we have against the very same foreign power. What happens in 10 years' time? What happens to the integrity of this college in 10 years? If you share your work on a whim with a girl you've taken a fancy to, and what happens 10 years after that? Cannot survive by making oneself wrong. That is why this university is still here. That is why I am still here. I hope you understand. ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई उसका नाम नहीं होना चाहिए. वो सड़ा हुआ जैसा अनाज होता है ना, एक दाना लंबे समय में नुकसान करता है, तो 10 साल बाद तकलीफ हो जाएगी. कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा काम भाई धूल में मिट जाएगा अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो. मैं अभी ना के साथ ही जा रहा हूँ. Make your decisions for you.
By all means, publish with Clara. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर तुमने क्लारा का नाम ऐड किया तो मेरा मतलब जो सपोर्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो भाई मैं हटा लूँगा। तुम अपने चांसेस ले सकते हो दुनिया में, बट मेरे सपोर्ट के बिना, और बहुत तकलीफ भी होगी तुम्हें। किसी का एड्रेस दिया इन्होंने व्हाइट हॉल में। ओके, ये कह रहे हैं वहाँ जाओगे तो तुम्हें एक और रीज़न पता लगेगा जिससे तुम क्लारा का नाम निकाल दोगे। ओके भाई, सिचुएशन काफ़ी अलग होती हुई। I'm sure things will become clear. I think you've made things very clear. Well, let me know what you decide. Just knock any time. काफ़ी थक गए हम लोग भाई, हमारी करंट सिनारियो में आ गए हम लोग, जहाँ पे हम लोग काफ़ी थके हुए हैं। गेम ऊपर सेव होता हुआ। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा, बट उठ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग रेस्ट कर रहे थे एक्चुअली। ओए प्लेन! Hey! Hey! Smoke. Someone's there. कहाँ पे स्मोक है? अच्छा वो स्मोक, वो तो बहुत दूर से आ रहा है। एक झंडा भी दिख रहा है मुझे राइट साइड में। अभी नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको अगर मैं थोड़ा राइट साइड जा पाया और तो। ये क्या हुआ अपने आप? इसके वो आगे दिख रहा है ऊपर, देखिए सेंटर में। आई थिंक स्वीडन का झंडा है, पता नहीं कौन सा, फिनलैंड, स्वीडन, सर नॉर्वे का झंडा है। ओके, स्टोरी अब थोड़ा सा स्किप होते होते आगे बढ़ रही है। हमने दम लगा दिया, आखिरी जो भी सांसें हैं इस पहाड़ पर चढ़ने में लगा दी हैं। और आप देख सकते हो जैसा कि धीरे 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 आगे बढ़ते हुए। हाँ, मैंने कहा ना एक झंडा है ऊपर, ये रहा। मुझे पता नहीं था ये नॉर्वे का है, मतलब जाना पहचाना झंडा है, काफ़ी फेमस है, बट नॉर्वे ध्यान से निकल गया था। ओके, शिप भी है, बट ये शिप तो जा रही है। No, you can't believe it. Hey! Over here! Come back! Hey! भाई अब क्या किया जाए? काश फ्लेयर होती मेरे पास। ओह! नहीं 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 नहीं। अरे मैंने क्लिक किया है, मैं क्लिक ही कर सकता हूँ, कुछ और कुछ नहीं कर सकता। अब क्या होगा आई डोंट नो। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा ये? क्या ये स्टोरी का हिस्सा था कि मैंने कुछ गलती की, कुछ मिस कर दिया मैंने? ओह, कुछ अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पूरा वेस्ट आई थिंक, पूरा वेस्ट है आई थिंक। यहाँ तो ऑलरेडी 2 कब्र है। सबसे पहली मेरी नज़र उसी पर गई है। और ये ऑयल है क्या? क्योंकि पानी तो सफ़ेद है, बर्फ़ भी सफ़ेद और नीला होता है। ये काला काला क्या है? कीचड़। पर कीचड़ तो यार हो नहीं सकता बर्फ़ में, मिट्टी कहाँ होती है जल्दी वहाँ। आई थिंक वो जो घर बोला था ना वाइट हॉल, आई थिंक वो अब आने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने कहा था क्लारा के बारे में आपको, मतलब उस बंदे से बात करने के बाद तुम क्लारा का नाम और कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि निकालना है। अब ये वाइट हॉल है कौन? ये फिर से वही इंग्लैंड नाउ 37-4 टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स। अरे ये कौन सी लूप में घूम रहे हैं यार हम लोग? ये पीछे क्या आ रहा है? ठीक है, क्लैरा के बारे में बात करनी है। यस, मैंने क्लैरा का ऑप्शन चुना है। एक और ऑप्शन जो था मैं देख भी नहीं पाया यहाँ पे। व्हाट कैन आई से? रिस्पेक्ट योर डिसीजन। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब काम के बारे में बात करता। अरे ये सब क्या हो रहा है? टेलीग्राम आया है, मोर्स ने भेजा, कोड है इसमें कुछ। एक इंजर्ड है, 2 मर गए जो हमने कब्र देखी थी। सस्पेक्टेड सोवियत एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर।
ठीक है, ये सपोर्ट उसके लिए, हेल्प के लिए भेजा था लेटर, ये वो है। ये आगे चलते हैं। एक्चुअली हम उस कमरे में भी आ गए, उस कमरे का हाल है ये। और तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, लेटर तो मैंने देख ही लिया है, तो बाहर निकलते हैं। इस एरिया में सोवियत एक्टिविटी सस्पेक्ट की गई है। जिस बंदे ने भेजा है ना, उसने साफ साफ लिखा है कि मुझे तो डाउट है भाई कि यहाँ पर सोवियत एक्टिविटी है। हाँ, फाइनली डॉक्टर हैमिल्टन, ये भी कैम्ब्रिज से हैं। So good to meet you. How do you do? Excuse me, I won't be a moment. Still 3 o'clock, yes? Oh, no need to reschedule. This won't take long. It should be very quick. Right then, please do take a seat. Delighted you could make it to London. I do hope you get the time to enjoy it a little too, considering how busy you've been recently. ठीक है, यहाँ पर बोलते हुए बहुत बिजी थे, समय निकालने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ लंदन को एंजॉय किया होगा। I imagine you're wondering why we asked you here. Well, it can't have surprised you that your field of study has been of increasing interest to us, especially since the war. You're interested in climatology? Oh, of course. The paper is going very well, I hear. Well, it is now, thank you. Oh, yes, your professor, John Hargreaves, passed us a copy. And it's impressive, the amount of information you've managed to gather. Although I imagine the process of gathering it was rather difficult on your limited budget. You know all about it, it seems. As I said, we were most impressed and wanted to make you an offer. Reward, even. Okay, एक ऑफर्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है ऑफर और रिवॉर्ड क्या है उसका? You've no doubt taken your budget to its limits by now. What would you say if I could guarantee you a practically unlimited budget for further study? Ensure you had the best equipment, like the Americans. Take you right to the heart of things. The heart of things? I believe you traced the source of the radiation back to Antarctica, didn't you? Well, it was me and someone else. I see. Well, whatever the details, I'd say that warrants further study on location, wouldn't you? Okay, अंटार्कटिका में जो रेडिएशन के साइन पाए गए थे ना, वो इन्फॉर्मेशन इनको मिल चुकी है। We could place you with the Falkland Islands Dependency Survey working in I think जो अभी हम काम कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है। Happy amateurs. तभी तो हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो हम लंदन छोड़ के अंटार्कटिका काम पहुँच गए। Of course, you'd probably have to sort a few things out with the other name we saw on the paper. Okay, ये क्लारा की बात आ गई है। I hope that wouldn't be too difficult, considering what's on offer. The other name, Clara, you mean? Lovely name. Probably for the best she wouldn't be able to go. Oh, not my say-so, I'm afraid. It's run a bit like the army down there. No women allowed. I don't think she'd like the idea. I can assure you this is bigger than any one person. I'm sorry, I'm not sure what... कुछ और ही प्लान है भाई, आर्मी भी घुसी हुई है, कह रहे हैं आर्मी में औरतों को अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं जान दे रहे हैं। On your way in earlier, so I'm at liberty to tell you a little more. Things in the Antarctic रस खुलने वाला है। A little strained recently. Lots of vested interests, territorial claims overlapping. Some sides wanting to secure the resources under the ground. Now, this kind of thing has been going on for decades, of course. What kind of thing? Oh, the Germans were flying over there, dropping swastikas in big circles before the war, that is. इन गधों ने भी, गेम डेवलपर्स गधे हैं जिन्होंने स्वास्तिका नाम दिया है। इसको स्वास्तिका नहीं कहते जो साइन है। Bit of a royal mess, if you ask me. Still, we're trying to work with. Why would you do that? Isn't it dangerous? The idea is to avert danger, I believe. It should all be in everyone's interest, you see. Every country signed up to something called the Antarctic Treaty. All a rather clever bit of politicking that happened behind the scenes a few years ago. Set up to ensure that Antarctica is used for strictly peaceful purposes. अंटार्कटिका का यूज सिर्फ और सिर्फ शांति की जो चीजें होती हैं उनको बनाने में किया जाएगा। कोई भी वीपन से रिलेटेड आइटम्स नहीं बनाई जाएंगी। किसी भी जगह पे अपना हक नहीं बनाया जाएगा। No more aggression, let's say. No World War III, you mean?
ये अंटार्कटिका जो ट्रीटी थी ना, जो साइन करना था उसके हिसाब से था, बट 10 साल में बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। This is all strictly confidential, but the sounds coming from Whitehall are not good. We're rather worried that it might all fall through. How worried are you? Worried enough, but there's no immediate cause for alarm. Well, in addition to the climate science you'd be able to do, tracking the radiation in the clouds and so forth, we'd like you to inform us of any other sources of radiation out there, what the readings are. If there are any bombs being set off on the continent, it's important that we know as much as we can about them. We don't know what the Soviets might do next. You'd be using the very best equipment, as I said. Useful for your career. Useful for us. This is. हाँ ये पूछ रहे हैं, ये क्लाइमेट साइंस ही है ना? आपने मुझे बम में डाल दिया, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही हैं। But as I say, if you can help us in this small way, it would certainly help that career of yours. How can you help, if you don't mind me asking? Well, after speaking with a few people, Professor Hargreaves, for example, I'm sure that whatever your academic ambitions, after working on something as important as this, you'd have no trouble progressing. And if nothing else, think of the adventure of it. What a reward it would be for all your hard work. What do you think? You want me to decide now? Oh, not straight away, but ठीक है, थैंक यू। मैं time तो is डर के rather लगता है अभी tight. बताना था We यहाँ need पे। an answer. टाइम कम है, बट अभी नहीं Sorry, जवाब देना है I've यहाँ got a पे। meeting in Westminster in 20 minutes. 20 मिनट का टाइम है भाई, ये तो It's been अच्छा very नहीं, ये तो good to मीटिंग meet में you. जा रहे हैं 20 मिनट में। Do let me know. हाथ भी नहीं मिलाया, बोलो काम हो गया तो मिलाना भाई, हाथ देखते हैं। And नहीं if मिलाया। this Clara thing feels like a sticking point, all I can say is sometimes we all have to answer to something. हाथ तो मैंने पीछे कर लिया, greater मतलब than हाथ ourselves. नहीं मिलाने वाले हम लोग। Why not think of it as an opportunity for you and to do what's right? That's right. I'm sure you understand. Women come and go. This is for your country. ए बाहर नहीं जाना, फिर से अंदर जाओ। अरे मिस कर दिया क्या मैंने कुछ? बहुत कुछ मिस नहीं, नहीं अभी है, मौका है। चलो, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था कि यार अगर मिस कर दिया तो फिर तो गड़बड़ हो गई। कंट्रोल थोड़े से अलग हो जाते हैं इस गेम में। ठीक है, फाइनली देखो मैं कहाँ दबा रहा हूँ, वो कहाँ जा रहे हैं जनाब, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ये ऑप्शन तो है ही मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लीटर मिलता हुआ, इसमें क्या है, लेट्स सी। मैसेज जो मिला था यूएस मिलिट्री की तरफ से, वो नॉर्वे को ऑलरेडी आइडिया है, अपनी शिप भेज दी है, स्काउट प्लेन भी आ जाएगा, 6 बजे शाम को आएगा प्लेन, स्ट्रेचर रखो तैयार, और लैंडिंग एरिया, ट्रांसपोर्ट टू लैंडिंग एरिया। ठीक है, उस इंजर्ड आदमी को जो है उसको आप तैयार रखो कि भाई लैंडिंग एरिया तक पहुंच जाए वो। ऐसा ना हो कि मालूम पड़े भैया कि प्लेन आगे खड़ा है और जिसको ले जाना है वही नहीं आया है। अब यहाँ से क्या, आई डोंट नो, इस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, और मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि कंट्रोल का है, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ चला तो ओके। अब इसमें से लैंडिंग एरिया कौन सा है? जो 2 लोग डाउन हुए थे वो तो हैं ही, आवाज़ भी आ रही है कुछ अजीब सी, शुश शुश करके, मतलब कुछ ओपन हो रहा हो जैसे गेट वेट। एक बार खाली कब्र पे जाके देखूं, खाली कुछ ऑप्शन आ रहा है, नाम वाम कुछ भी नहीं है। बहुत ही खामोशी से सब कुछ हो रहा है, बट सीरियसली कुछ कहने को नहीं है, सब कुछ देखने को ही है। यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या है, हड्डी जैसा ही लग रहा है, बट पता नहीं क्या है, हड्डी ही होगी शायद, बड़ी जानवर की, वेल की।
सामने एक जीप है, साइड में 2 अजीब से प्लांट जैसे एरियाज हैं राउंड सर्कल में, जैसे पबजी में वो कौन सा मैप है, मैप का हिस्सा है जहाँ पर सिल्वर कलर का ऐसा बिल्डिंग है बहुत सारे। ठीक है, एक जीप मिली है, हम भाई सीधी सी बात है हम जीप की ही कोशिश में थे, मिलता हुआ हमें, और नॉर्वे का साइन वाइन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन ग्राफिक्स, रेड कलर क्या सूट कर रहा है ब्लैक के साथ। स्टार्ट द कार, इंजन। एक लेटर रखा है यहाँ, क्या रखा है, कुछ है यहाँ पे? नथिंग, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ आइडिया तो होना चाहिए मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि अंटार्कटिका में भाई रोड्स नहीं होते या कोई हिंट नहीं होती कि आप निकलोगे यहाँ से और कहीं पहुँचोगे। हो सकता है कहीं हो, मालूम पड़े कहीं के ना रहो। गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, दम जितना है लगा वगा रहे हैं। फिर मत रुक जाना, लास्ट टाइम भी ऐसे ही ऊपर से गिरते वक्त इतना हो गए 45 पे, फिर रुक गया। अरे ये क्या, सो गया? ही इज टू टायर्ड यार, बहुत थक गया है ये हमारा पीटर। फिर दम लगा रहा है। नहीं, सो गए ये तो। और सामने मुझे अजीब, ओ फ्लेयर का निशान, पर क्यों? फ्लॉयड का, वो भी हमारे दोस्त का, पर इसने क्यों यूज़ किया ये? इसको मैंने तब कहा था जब मैं इसको सिग्नल दे दूंगा कि मुझे हेल्प मिल गई है और फिर तो अपना निशान देना ताकि हम ढूंढते हुए आ सके। बट ये क्या है? पर अच्छा है ना, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अरे हाँ, रास्ता मुझे दिख जाएगा कि मुझे उस दिशा में जाना है, ये एक फ़ायदा है। हाँ, किस्मत देखो यार, गाड़ी अब भगेगी हमारी। कितनी कूल गाड़ी है। मेरी स्क्रीन पे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कहाँ का रास्ता है वो नहीं दिख रहा, बट गाड़ी कहीं ना कहीं अब डायरेक्शन खुद ही डिसाइड करती है। मैं राइट लेफ्ट ले जा सकता हूँ, जैसे राइट ले जाना चाहूँ तो आई थिंक, हाँ देखो लेफ्ट ले जा पा रहा हूँ, राइट भी ले जा पा रहा हूँ। अच्छा है कि ढलान है, क्योंकि मैं तो ऊपर से नीचे गिरा था तो उस हिसाब से तो मेरी ढलान कम आनी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल फुल है इसलिए और खुश हैं हम लोग। मुझे ये नहीं एक पता लग रहा कि वो कहाँ पर है। हाँ, दिखा, एक और आया है, सामने ही है, ये रहा। दी एंड, ये कैसा दी एंड है यार? आई थिंक कुछ बदलने वाला, ये स्टोरी एंड नहीं है यार, ये एंड नहीं हो सकता गेम का, ये गेम का एंड नहीं हो सकता, बट ये तो कोई एंड ही नहीं है। ये कैसा एंड है यार? यहाँ का एंड हो गया, वहाँ का एंड क्या? What on earth was all about? I think हम इससे अब कहने वाले हैं क्या? I would have enjoyed it if I was a 10-year-old boy, but it was just boys and their toys again. Is that a bad thing? They're presenting themselves as if they're heroes instead of the land grabbers they actually were. Okay, I see what you mean. I know what you're about to see, that they were just men testing themselves against the world. Well, that's important. Who says so? Fine, stop it now. And another thing, where were all the women? I counted one, she was a cook. She was a very pretty cook. Are you serious? Okay, I'm joking. I'm watching you, Hamilton. You're totally overreacting, Clara. It's just a film. Don't let it get under your skin. It's depressing. मूवी देख के लौट रहे हैं। Just turn the radio on, would you?
कुछ बातचीत हो रही है मूवी के बारे में। रेडियो ऑन करना है भाई, जब भी मैंने ऑन किया लास्ट टाइम BBC वाले ही ऑन रहे हैं हमेशा। ओके ओके, अंटार्कटिका का जो पीस था ना वो टूटने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सब लोग अब शांति बना के रखें। Neither Britain, the United States, nor Soviet Russia could reach a deal. And in an increasingly nervous political atmosphere, तो अंटार्कटिका में अब जो चाहे जितना अग्रेशन दिखा सकता है, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। in Antarctica. After pinning the blame firmly on what he called Russia's continuing aggression, the Prime Minister warned that the next steps are far from clear, and that in this climate of mistrust, the world needed to stay vigilant. It remains to be seen who will make the next move. तो भाई आने वाला भविष्य पूरी तरह से पता नहीं क्या है, किसी को पता नहीं। ओए ये कौन है? ये कौन शूटिंग कर रहा है? Stop shooting, you mad fool! मैं दोस्त हूँ भाई तेरा। प्लेन इसने क्या? अच्छा इसने कहीं प्लेन वाले को मार तो नहीं दिया? It's you, mate. Are you out of your mind? Sorry, mate. I thought you were a bloody Russian. Not a bad shot, though. I'm gonna catch us a gull for our tea. You hit the vehicle. The engine's dead. You satisfied with yourself? Never felt better. Took the last of those painkillers and a drop of whiskey sorted me right out. I thought I'd go for a अरे ये तो हमारा ही प्लेन है यार। You found whiskey? I had that all along. Save it for special occasions, birthdays, Christmas, crashing in the middle of bloody nowhere. Is the radio on? Ah, yeah, had to get away from those beeps. Better out here. Why didn't you just turn it off? Why don't you leave me in peace? Well, let's get you inside. Ah, yeah, good idea. More whiskey. भाई अभी बिल्कुल डेड एंड आ गया है मेरा। स्क्रीन पे लिखा गया था दी एंड, अब एंड नहीं है वो, पता नहीं अब कौन सा एंड आ रहा है। एंड के बाद का ही है, क्या कहते हैं उसको, प्रोलॉग, एपिलॉग क्या कहते हैं, मतलब ऐसा होता है एपिलॉग के बाद, मतलब मेन स्टोरी खत्म हो जाती है वीडियो गेम में, उसके बाद भी गेम चलती है। जैसे मूवी में एंड क्या कहते हैं, एंड क्रेडिट सीन्स आते हैं ना, वैसे ही कुछ। You know there's a Russian voice that appears on that channel once in a while? Really? Yeah, sounded urgent, whatever it was. Same phrase over and over. ये कहना है कि कुछ रशियंस की आवाज़ आ रही थी, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे थे, लग रहा था कुछ अर्जेंसी है। Bloody well hope not. Why not? We need help. They don't want us here, you know. Why the hell should they save us, eh? We're all stuck out here. We're in the same boat, aren't we? Whatever you found out there, you weren't supposed to see it. If you think some Soviet's going to be happy to see you get out of here alive, you've got another thing coming. Personally, if I saw one out here, I'd make sure he didn't make it home either. Before he did the same to me. Alpha Romeo Lima. Oh, ये तो इंग्लिश में है। Faraday Station calling. मुझे लगा एक्साइटमेंट में उठाएंगे बड़ी, ये तो। We're glad to hear you. Hello? We picked up a distress call from this frequency. Can you hear me? Over. Yes, I can hear you. You're very faint. Can you tell me your position? Over. Freud, what's our position? 82 degrees south, 19 west. We're at 82 degrees south, 19 west. Hello? अबे फिर डिस्कनेक्ट उम्मीद जगह के। Hello, can you tell me what's happening? Why is everywhere deserted? Over. Now hold on. What the hell are they doing? It's possible that रेडिएशन लीक है, ठीक है, हाँ। वार्निंग सिग्नल बार बार वो जो सोवियत थे वो कर रहे थे, triggered an evacuation. और हमारा लोकेशन भी उस रेडिएशन के हिस्से में आता है। I'm sorry, I can't tell you anymore. Don't worry, there's no imminent danger.
That's right. We're sending a rescue party out. Hold on tight. Over and out. Wait, don't go. रेस्क्यू पार्टी आ रही है, बट कुछ और भी ये कहना चाह रहे थे, पता नहीं क्या, बोल नहीं पाए पूरा. That again. It's too bloody sinister. Turn it off. Well, ain't that a beauty? I can't believe it. They're coming. Yeah, I'll believe it when I see it. Oh, have a little faith, please. They'll come. Well, I hope so, mate. We're both in line for knighthoods if we make it out, that's for sure. कह रहे हैं हमें नाइटहुड का अवार्ड मिलेगा अगर सर्वाइव कर गए तो. Failed Antarctic explorers. Otherwise, the whole endeavour would just look nuts. Shackleton, remember him? Marooned most of his men on an island for a year. They were pioneers, surely. Robert Scott, he got the polar medal, didn't even make it home. Heroic failures. Just like us. Hey, how does Sir Peter Hamilton sound? सर पीटर हैमिल्टन. कहाँ जाएगा हमें मिलने के बाद नाइटहुड? Have to find us before the food runs out. Well, I found you again, didn't I? Yeah. You did, mate. You did. Which reminds me, how did you find the plane again? Dumb luck. No, come on, seriously. Well, no, it was lucky. Spotting the flares that you sent up. What's that? I never sent up any flares. ओह, ये क्या है? The flare box was empty. Not been checked in years, my guess. Bloody panicked me for a while. इसके पास फ्लायर गन थी नहीं? My own eyes. How else तो did वो you दो get- फ्लायर गन कौन फेंका था यार? Why don't you take a look out? अबे ये क्या चीज है? You see anything? It's too hazy. Wait. अरे एक There और? it is. That's not far away. So there is someone else out here. भाई साहब. Do you think they're friendly? Chances are no. We're gonna need more food soon. ये तो गन वन लेके रेडी. What are you doing? This is from World War One. Would you believe? Don't mess with that thing again. You've done enough damage. Here. मुझे देगा. One पता bullet था. left. एक ही बुलेट है. We know. सिर्फ एक बुलेट है इनके पास. We don't know who that could be out there. All I'm saying is, be on your guard. I'm not shooting anyone. Just raise it up when you approach. That's all. Make sure you're the one in charge. If in doubt, make sure you're the one that fires first. कह रहे हैं भले चलाना मत, बट उसकी ओर लगा तो देना एक बार. पर लगे जब कि भाई कुछ गड़बड़ है तो पहला चलाने वाला बनना, क्योंकि सामने वाले ने पहले चला दी तो और तुम्हें लग गई तो फिर सही में लग जाएगी. Here all day then? Are you gonna be all right? My whiskey, mate. I'll be happy as Larry. And I've got this. So just keep that gun raised. You'll be fine. Make sure you don't get that knighthood posthumously. कह रहे हैं मरा हुआ वाला नाइटहुड ना मिले, बस ध्यान रखना. कहाँ से हमने शुरुआत की थी गेम की? मतलब नहीं, ऐसा तो देखा जाए शुरुआत तो ऐसी ही थी, बट बीच बीच में क्या क्या देख लिया. ओए गन होल्ड अप. ओहो. ओके हाँ एक. अरे पर मैंने जल्दी नीचे कर दिया यार. अब कर. मेरे हाथ में है भी कि नहीं कंट्रोल? मेरे हाथ में, अच्छा है, तो मेरे हाथ में कंट्रोल है. कोई है क्या? नहीं, ऐसा लगा बैकग्राउंड में. नहीं यार कोई है तो नहीं, बट फेंका यहीं से था तो कोई है तो यहाँ पे, बट कौन है पता नहीं. थोड़ा आगे चलते हैं. वो रहा सामने ही है. ये रही राइट साइड में. उसने बोला ही था कि भाई अप करे रखना, ठीक है मैं अप कर रहा हूँ. अरे रिस्क नहीं लेना भाई किसी तरह का. मालूम पड़े स्टोरी का एंड कुछ गलत हो गया. मैंने लास्ट टाइम भी गेम खेला था, उसमें भी एक छोटी हाँ कोई है तो,
देखने में रशियन लग रहा है दाढ़ी वाड़ी से। अब एक गोली है, फायर तो करूंगा नहीं मैं, फायर नहीं करना, एक ही गोली है यार। अब क्लोज चलते हैं, अब क्लोज चलते हैं। वो अपने आप ही आई थिंक ऊपर करेगा। वो देखो, एक और मारा फ्लायर गन। वो डर गया। हाँ होल्ड करना है, अब होल्ड करना है, अब होल्ड करना है इसके ऊपर। इसे चाहूँ तो मार भी सकता हूँ इसको, मैं आपको बता दूं बात, पर ये एक्चुअली दिख नहीं रहा मुझे लग नहीं रहा इसके पास गन होगी, पता नहीं क्यों, फीलिंग नहीं आ रहा मेरे को, लग नहीं रहा इसके पास गन होगी। आगे चलते हैं। पर देखने में दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है तो रशियन जैसा लग तो रहा है। गेम बोल रही है होल्ड करो, तो मैंने होल्ड किया है। एक बार खाली दिख जाए ना ये क्या है बस। अब होल्ड बोलेगा तो नहीं करूंगा मैं, ये 2 बार उल्लू बना दिया मुझे। इन रशिया में कुछ कह रहे हैं। या друг, don't shoot, friend. अरे मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। Нет, нет. ये भाई साहब हैं, मैंने कहा ना रशिया नहीं है। You are right. ओ ये क्या हुआ? हमारे प्रोफेसर के पास वापस आ गए। Peter, देखो पीछे परछाई दिख रही है मेरी कांच में। अबे फिर इंग्लैंड और 37-4, ये है कौन सा मैच? Anyway, you said you wanted to see me about something, please. Something you wanted to let me know. There is. All right. Well, have you come to a decision? ओके, डिसीजन के बारे में बात करनी है। तो मैं क्लारा, ये एक्चुअली मेरा जो डिसीजन है क्लारा का, ये मेरे पुराने डिसीजन पर से डिसाइड हुआ है कि मैं क्लारा के साथ रहना चाहता हूँ, उसका नाम रखना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी ये डिसीजन के कारण मेरे पास हेल्प ना आए, हो सकता है। You will be fine. ओ ये प्लेन रशिया वाला है, ओके। और ये बंदा हमारी मदद कर रहा है। डेवलपर्स ने अभी तक तो अच्छा दिखाया है। अरे हमारा ही प्लेन है, बट देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। What have you done to him? Maybe I saved his life. For now. Now? What, till your band of merry men turn up? We need to leave. Can this plane fly? What? Are you the pilot? Can this plane fly? Peter! Peter, what's going on? Why do you bring this damn Soviet agent in here? I didn't. We need to leave. You can bloody leave. The British are coming for Coming? us. No. They're coming, all right. Just not for you. No. Nobody is coming. You can think what you like. We're staying put. And you, my friend, can get the hell out. I tell you, there's nobody else out there now. We need to move. Right. Who the hell are you? भाई ये मत करो। Piss off, you and however many comrades you have out there. You do not know what is at stake. You do not know anything. We will die here. We need to... अरे यार, अरे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। We do not have time for this. Now, can this plane fly? It doesn't matter. We just need to wait till our guys arrive. What is it? Is it the engine? We don't need to fly out. If it is the engine, maybe I can fix. How the hell did you get here in the first place? You must already have transport. He's got a vehicle. Yeah, I had one. No fuel. No fuel. Well, what happened out there? रास्ते खुलने वाले हैं फिर एक बार। He's not feeling very well, I think. Yeah, what's this about a vehicle? I told you the vehicle is dead, but you have one. I saw it outside. Will it move?
This man put a अरे bullet through the यार engine. It's dead. He likes his weapons too much, I see it. Here. Have it. So. We need to fly or we die here. Die here? What's going on out there? Your friends. Are they running from something? They are an explosion. They are dropping a nuclear bomb. हाँ No, you're wrong. Soon. भाई न्यूक्लियर You have बॉम्ब radio? You are ready, you You have have heard countdown countdown? beep beep Beep, beep, like Sputnik? That's a countdown. It's just a radiation warning. It is countdown. We do not have long. You have heard it getting faster, yes? Peter, it was on that frequency when I switched it off. See if you can get it. बाप रे भैया ये तो न्यूक्लियर वॉर वाला सिनेरियो मतलब पता है क्या है रशिया अमेरिका ब्रिटिश देखो खुद को मिला नहीं है तो दुनिया में और किसी को भी नहीं देना है ऐसा फंडा है इनका और इसलिए इस जगह को ही खत्म कर दे रहे ना तेरा ना मेरा किसी का नहीं होगा ये They said they'd keep broadcasting, so we knew they were on their way. And are they? Peter, turn the dial. टर्न द डायल Can you hear anything? Hold on. What's going on? There's nothing there. Christ almighty. एक ही चैनल खाली है बस उस काउंटडाउन Maybe I could fix the aircraft if you would tell me what is wrong. Do we just need to pull it out of the snow? Is there damage? No, it's in good shape. I saved the plane, but it's more complicated. Frozen carburetor. That's what it is. You have a lighter? Something to heat it? Wait. Here. Then I can fix. ओ भाई ये बंदा जो है ये फिक्स करने की कोशिश कर रहा है If I am careful, it will be enough. Then we're all right. We're saved. Maybe we are all saved. Jesus. What is happening? Save me, Soviet. ये दुखी है कि सोवियत वाला बंदे ने इनको मदद की इन्होंने पहले भी कहा था अगर मुझे मिला सोवियत वाला तो मैं मार डालूंगा He might be the only man within a 1,000 miles who can fix this aircraft. Lucky we found him. Yeah, lucky you couldn't shoot straight. Yeah! Well, what is it now? You say you land the plane well, but there's a hole underneath. In the fuel tank. What does that mean? Can you fix it? Yeah, I did. I can close it up, but that is not the problem. There's no fuel. Can you check again? There's nothing. Oh, Christ. Is there anyone else we can radio? They would be on point. They are all gone. We're screwed then. Yeah, unless there is fuel in the wing tanks. Maybe? Not this time. Flying light. Then we are, as you say, screwed. भाई बाहर जो गाड़ी है उसका लेकिन उसका फ्यूल चलेगा नहीं ना बाहर जो गाड़ी है तो यहाँ पे फिर एक बार हम लोग शून्य स्थिति में पहुँच गए गाड़ी उड़ सकती है ये प्लेन उड़ सकता है बट फ्यूल नहीं है पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम Might as well make use of that lighter. Not your usual brand, I would guess. No. Thank you. Seeing as we're all doomed, might as well be mates. Take it you don't have any out there anymore. Unless. No. Why were you alone? I was following everyone as we evacuated. In the storm, we could not see each other. My vehicle ran out of fuel. अरे बेचारा ये बंदा है ना सबसे पीछे था ये नजर रखा हुआ था बट ये सबसे लास्ट में था इसलिए पीछे रह गया पेट्रोल खत्म हो गया इसका और पीछे उन लोगों ने मुड़ के देखा ही नहीं और छोड़ दिया इन लोगों को सब लोगों ने इसको prayed for them to come back, but I knew they wouldn't. The snow covered our tracks, and they had their orders.
They wanted to survive. Yeah, they would have been crazy to come back. कह रहे कि अगर वो लोग वापस आए थे तो ही चमत्कार था। रास्ते मिट चुके हैं, बर्फ बहुत गिर चुकी है। Well, your English is very good. I take it you're not a spy. This would be very bad spy. No, I am engineer and translator too sometimes. I could help translate British and American radio traffic. That makes me think. What were you doing here? All right. In this new spirit of international cooperation, you might as well know. I was asked to take this gentleman out to the big British science base down south. He was supposed to be studying there. That right, Peter? ये बेचारे हमें छोड़ने आए थे, ये भी फंस गए। Yeah, that's what we told everyone too. What do you mean, told everyone? You know, officially. Unofficially, it was a little more than that. You were studying something else? We were studying you. I am surprised you did not know. ये क्या कह रहे हैं? You have been studying us. No, I haven't done anything yet. I was meant to be studying climate science. ये कह रहा है कि मैं तुम लोगों को पढ़ रहा हूँ। So, maybe it is you who are the spies. Yeah, but it seems you don't know all our secrets just yet. I saw the mine. You? You made it that far. I did. So, you saw the base where we live. It must have been awful there. No, we packed everything up in the big trucks before they left. You don't think we really live like that? You must have thought we were animals. He did. वो ड्राइवर जो हमारे साथ है ना दोस्त, उसने सोचा था कि ये जानवर जैसा रहते हैं। Maybe you better lay off that stuff. There's not much reason to lay off it now. So what were the rest of you doing out there? We monitored that mine, checked for leaks, monitored for radiation levels. But we monitored other things too. Other mines? Not that, no. Then what? Your bomb tests. एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है कि हम लोग यहाँ बॉम्ब टेस्ट किया करते थे, ना कि ब्रिटिशर्स। हाँ। It should prevent the Americans too. अमेरिकन्स भी करते थे। Stop them. Well, it's interesting what they had told you. Did they tell you to study our bombs? No. I mean, not in those exact words. बादलों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। Really be studying your own? Are you suggesting they lied to me? I don't know what they said, but our government, they lied to us. Well, my government wouldn't. Yeah, whatever you think, we know British bombs have been getting too close. Shock waves from one caused the landslide, killed 2 men. अच्छा हाँ, वो देखी थी मैंने। Norwegian base. Yeah, believe so. We don't test here. Seems you do. And each time your bombs go, they make more places unusable, like the mine. Are you saying that's a British bomb that's going to go? No. This bomb is Russian, and it will be dropped right over the mine. What? Wait, you destroy your own mine? Yes, the mine is old. They can leave it, but they want to destroy it to keep it a secret. That's insane. Maybe they think it is better this way. Better than everyone discovering what they've been up to? Stockpiling uranium, I suppose. Yeah, I suppose so. Surely there'd be some kind of retaliation. Maybe they think they can just say it is a jest. It sounds bloody risky. British and the Americans would expose it, surely. What, and risk revealing that they have been breaching the treaty too? भाई सिनारियो ऐसा है कि यहाँ बम गिराने के बाद कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बम गिराने के बाद अगर अमेरिका और ब्रिटिश भी कुछ बोलते हैं तो उनकी पोल भी खुल जाएगी।
तो भाई देख लो कौन पिसता है गवर्नमेंट के इस पॉलिटिकल ड्रामा में। इंसान, नॉर्मल इंसान जिसको पता भी नहीं वो क्यों आया है यहाँ पे। I just wanted to get home. Do you know if there's any way out of it? I know. There's a plane with a bomb on it. That is what the countdown means. And that's it? We're going to die here. Yes. Can't believe there's no fuel. No fuel. And no escape. भाई मेरे मन में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर ये मान लो ये यहाँ से निकलेंगे भी तो कैसे निकलेंगे यार। मतलब फ्यूल है नहीं, कोई आने वाला है नहीं। अब क्या सस्पेंस है, एंड कैसे होगा, आई डोंट नो। इंतजार कर रहे हैं मरने का, बम गिरने का और मरने का। He's keeping a stiff upper lip about it. I do not understand it. Don't worry, British thing. I did not think my final cigarette would be British. Yeah. Might as well go the whole hog. Not like I'm keeping it for later. Maybe not in your condition. I don't think he can hear me. हमारे पीटर भाई साहब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। When it comes, what do we see? Flash of light. कह रहे हैं कि जब न्यूक्लियर गिरेगा तो क्या दिखेगा। बहुत तेज़ी से होगा ना सब कुछ। बेकार लगी है ब्रिटिश वाइन। Yeah, I know. रशियन को। Yeah. I wonder where it came from. Bottom of the barrel, maybe. Oh. Ah, he's coming round. Thought you were completely out of it. You said you wonder where it came from. What? Something about barrels. Ah, yeah. So you did hear us. Yeah. Yes, mate, I was talking about barrels. Don't worry yourself. Unless you've seen some barrels full of fuel for this aircraft. I've seen barrels. हाँ, ओके। What's that? Barrels. जो बैरल्स हमको दिखे थे पहले, ऐसे तो बहुत सारे दिखे थे। You paint your aircraft fuel barrels. Red with a white stripe. Yeah, I've seen them, lots of them. Where? The British base, that way. What, you little beauty? Why didn't you say? I didn't know. I didn't know they were for aircraft. How far is the base? It's not that far. It's walkable. No, we need one. Someone needs to go. Too right. Yeah, there's only one who can go. What? No, he's in no fit state. No, he's fitter than you. You cannot walk. You could go. I have to fix the engine. We may already be too late. Come. We need rope. Hey, where are you going? We need to pull the aircraft out of snow first. Come. Do we have the time now? Do we have the choice now? भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, रशियन बंदे को बहुत ही ज़्यादा होपफुल दिखाया गया है। ये मुझे काफ़ी मतलब सही बात लगी। ये दोनों हर बार नेगेटिव बातें करते हैं बट ये बंदा हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। वो तो अच्छा है कि छोटा वाला प्लेन है, वो बड़ा वाला नहीं। ये अच्छा, इसका तो पैर ही गया है इसलिए मदद करेगा नहीं। We pull together after. American for you guys. 1, 2, 3. पुल पुश मत करना भाई, पुल। वो क्या मूवमेंट है भाई। Give me that. What? We need your saber, you fool. Hey, that's for my leg, mate. I need that. You need to show me engine. We need fuel now. You know which way to जो go. सबसे पहला था ना बेस नजदीक वाला, वहीं जाना है। रेड वाला वो देखो। Towards that red light. So it's weather coming in. It can come in very fast.
You need to be quick. You can do this. We need you to do this. Please. I can do it. We will die if you can't. I need to fix engine. If I finish, I come. But you are on your own now. Please. Go! Go! Come on. Up. अभी वही बढ़ते जा रहे हैं भाई। अभी देखना है वहाँ पहुँच के कि वो वही है प्लेन वाला है कि कुछ और है। और यहाँ पे गेम अपने मतलब जो पुराना इतिहास वाला है ना, क्लारा वाला, वहाँ पे पहुँच गया है, जहाँ पे मैंने क्लारा का नाम लिखने के लिए हाँ कहा है। मतलब कि मेरा मतलब इस गेम में फ्यूचर जो है काफ़ी अजीब होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। अजीब तो नहीं, मुश्किल होने वाला है। अगर मैं इसका नाम नहीं लिखता तो आसान हो जाता। अगर नहीं लिखा होता तो भाई मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करना पड़ता, कुछ होता, अलग हो जाते, पता नहीं क्या होता, आई डोंट नो। वो हिस्सा अलग ही हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि लव जीतता हुआ। वॉर तो चली गया है बट लव जीत गया है एटलीस्ट। अभी वॉर तो चल रहा है, अभी देखो। You promised. क्या प्रॉमिस्ड भाई? मैंने तो ना। यू लाइट? क्यों? तो मैंने तो क्लारा का नाम लिखने के लिए हाँ कहा है, इसको क्या बुरा लग गया? अरे ये कहाँ जा रही है? Get away from me. Clara, wait. Not now. Clara, come back. It could have been so good, Peter. Okay, I think मैंने Wait, it is good. It's getting published. I'm not talking about the bloody paper, Peter. Christ, us. Well, we are good, aren't we? Well, you might be, but I'm not sure I know what's going through your mind anymore. After everything we've done, after you promised, ये देखो। promise you that. Promise you that? What? Ow! अरे यार, अच्छा उसने देखो चौथा, ये प्रॉमिस Don't you टूट worry गया। about me, Peter. I'll be fine. Going to see your professor, were you? Oh, more fool me. I did go. I should have known you'd always back your little boys club over me. अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये कह रही है आप प्रोफेसर से मिलने गए, अपने बॉयज के साथ घूमे। भाई कहाँ? No, I told him. Word gets out, Peter. I didn't think it at the start, but you're just like the rest of them. You, of all people. Still, that's my fault, I suppose. Fault? No. मुझे तो लग रहा है भाई वो प्रोफेसर ने कुछ चालाकी की है। From the start, ever since you introduced yourself so formally, just Dr. Hamilton, work first. मेरा एक और ऑप्शन हटता, वो इंट्रोडक्शन ही बेकार है कह रही है। No, I didn't do that. I would have said Peter. Would you? No. Oh, and I suppose you didn't run away from my lecture that time. Didn't go on that march together. Take sugar in your bloody tea now. आखिरी दो ऑप्शन है भाई, ये भी गई, क्लैरा भी। Talking about living in that blue house by the sea. What was so frightening about that? Why the sudden panic? I didn't. मैंने तो रेड चुना था, ब्लू नहीं। We had a discussion. I don't remember one. Anyway, no, you're the one who's wrong. It was the red house. हाँ भाई वही तो। अबे पर your memory, अरे I can't even thinking straight. Yes. ये हो क्या रहा है? मेरा दिमाग का दही हो गया भाई। ये गेम खेलने के बाद मुझे फिर से ये देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है एक्चुअली में। I know what happened. I was there. Perhaps you were miles away again. Are you even here now? Yes. Here, yes, absolutely. Peter, were you ever here? I'm here now. I'm here. Not gonna be fooled by this any longer.
Do you actually believe अबे yourself? यार मैं इतना पॉजिटिव रहने की कोशिश की है मैंने. I don't know. You betrayed me. I'm not forgiving that. मैंने I can bloody well promise you that. भाई मैं सही में रियल लाइफ में कंफ्यूज हो गया हूँ. ये हुआ क्या है गेम में? क्लैरा आई क्यों थी लाइफ में भाई वाट लगाने मेरी? मतलब काम तो किए मेरा बट गायब भी हो गई यार. न्यू डिसअपियर एकदम गायब भाई. और एक रेड दरवाजा आ रहा है. रेड दरवाजे को लेके क्या करूँगा जब मेन मिला ही नहीं मुझे जो चाहिए था. क्लैरा, आई लव क्लैरा. प्रोफेसर वो आया. यही है वो दुष्ट. ये तो पूरा भाई वो छानछड़ नहीं छानछड़ क्या नाम था वो फ्रीगेट वाला. फिर 37 पे जा रही है. इंग्लैंड है कि भाई नामीबिया? Terrible state of खेलते affairs. ही नहीं आता. हर बार Anyway, you 37 said पे you 4. wanted to see me about something, please. Something you wanted to let me know. इस बार तो काफी गुस्से में हूँ मैं. रेड वाले के साथ जा रहा हूँ. अरे मैंने क्लारा का नाम. अच्छा. The paper's mine. I'd like to take Clara's name off. I am pleased. I think you've done the right thing. गुस्से में भाई मैंने निकाल दिया क्लैरा का नाम लिस्ट में से. अरे हद होती है भाई. बोल रही है मैं जा रही हूँ कुछ भी हो जाए मैं जा रही हूँ. ठीक है मैं किसी तरह धक्का देके यहाँ पर अभी करंट टाइम पे आ चुके हैं हम लोग. It is not far. You nearly made it. एक दिक्कत मुझे गेम में लगी है. गेम क्लियरली नहीं बता पाता. मुझे लगा था हम उससे उस पर गुस्सा उतारने वाले हैं. मैंने क्लैरा को एक्चुअली मैं रखना चाहता था लास्ट तक. Take that side. बट ये गेम Push. उसमें वो सिलेक्शन आ गया था. वो मुझे पता नहीं. उसको लिखना चाहिए था कि चूज क्लारा या कुछ और. Stay बट straight. कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है. जैसे ये है. ये कह रहा है एनर्जी लगाने को शायद. And true. Straight and true. Got it all wrong. ये कह रहा है कि Together, come. There is no time. आखिरी समय में ऐसे भी भाई सबको एहसास हो जाता है लाइफ में क्या गलतियाँ की हैं. वो जीते जी तो खूब मजे लेते हैं गलतियाँ कर करके. बट ये वेट कर रहे हैं जल्दी आए. पेट्रोल भरे. ठीक है आ गए. बैठ गए. पेट्रोल चालू हो गई है. सीरियसली हम लोग बच जाएंगे. वाह. कह रहे नाइट आउट मिलने वाला है. तैयार हो जाओ. ये भी गो. सही में बच जाएंगे. क्लारा अरे इसको क्या हो रहा है? मेंटल हो गया हूँ भाई मैं. एक रोग होता है ना कुछ है थीमिया. पता नहीं कौन सा थीमिया वो हो गया है. वो कह रहा है कि पीछे रह गई वो क्लारा. अबे यार पेड़ पे आ रहे बादलों में उड़ता हुआ पेड़. स्टोरी बिल्डअप की पहले 2 आवर्स में. 1 आवर में पूरा पत्ता खोला है. This beautiful thing, if you wanted it to be. Come here. एक बार फिर किस होता हुआ. और मैंने सही में भाई मैंने रेड हाउस चुना था. मुझे अभी भी डाउट हो रहा है इसके दिमाग पे. ये मेंटल थी क्या? ऐसा तो उसने बिना मतलब ही निकाला. मैं तो अंत तक इसके साथ था. What? The rain. Want to go back? You go. I'd like to stay a while. Are you sure? You know what you've got to do? You know the way? I'll find it. Well, okay then. You take care.
I wouldn't want to lose you now. Bye एक then. तरीके से ये सिग्नल है, पता है कि ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रुकना चाहता था। लास्ट टाइम हम लोग दौड़ के गए थे आगे, इस बार ये अकेले रुकना चाह रहे हैं यहाँ पे, और खुद का रास्ता खुद ही ढूंढेंगे। और यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती हुई, इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है लुक विट टेकर ने। बाकी का आप सब कुछ देख सकते हैं। अब एक्चुअली ये हुआ क्या भाई, देखो वो तो छोड़ के चली गई, ज़िंदगी अपने आप जी रहे हैं ये हमारे पीटर भैया। क्लारा ने साथ दिया नहीं। क्लारा को इस बात से दुख था कि वो प्रोफेसर से क्यों मिल रहे हैं बार बार, बॉयज़ से क्यों मिल रहे हैं। ये मेरा अभी 5-10 मिनट का एक्सप्रेशन है, फीलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस एक्टर ने किस मतलब रियल लाइफ बंदों ने रोल अदा किया है। देख सकते हो पीटर का विलियम ली ने, क्लारा का ओलिविया ने, फ्लॉयड का रिचर्डसन ने, प्रोफेसर की भी आवाज़ दी गई है, सब कुछ। गेम ओवरऑल अच्छा था। मुझे बस एक ही चीज़ लगी है थोड़ी अजीब, कि जब भी मैं कुछ सिलेक्ट करने जाता हूँ तो कुछ लिखा आना चाहिए। शुरू में आ रहा था, वो एंड तक आना चाहिए था। हो सकता है इस गेम में शायद ऑप्शंस हों कुछ ऐसे जिसके थ्रू हो जाए, बट मुझे ऐसे कोई ऑप्शन दिखाई दिए नहीं हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ये पूरा हो जाए, उसके बाद हम एंड करते हैं इसको। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये गेम आपको एप्पल आर्केड पर भी मिल जाएगी। इसका जो पब्लिश किया है ना 11 बिट स्टूडियोज़, वो भी बहुत ही शानदार स्टूडियो है। तो यहाँ पर हमारी जो गेम है वो ख़त्म होती हुई। स्टेट ऑफ प्ले आई थिंक डेवलपर्स का नाम है इनका, पब्लिशर 11 बिट है, और ये गेम समाप्त होता हुआ। तो हमारा जो ये सीरीज़ था भाई लॉन्ग प्ले का है, ये मैंने करने की कोशिश की थी जो लॉन्ग प्ले गेम प्ले होते हैं, बट इसमें मैंने अपना वॉइस ओवर भी डाला है। लास्ट टाइम वाला जो हमारा गेम प्ले था उसमें कमेंट आया था कि यार आप वॉइस ओवर भी करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लेट्स सी इस वीडियो को कितना रिस्पॉन्स मिलता है। प्लान तो ये था कि हफ्ते में एक बार लाने की कोशिश करेंगे, बट वो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता भी हो जाता है, डिपेंड करता है कैसी गेम खेल रहे हैं हम लोग। बट ये नया गेम था, इसका रिव्यू बनता था। रिव्यू में यही है कि भाई बहुत अच्छा गेम है। प्राइस इसका 400 के अंदर है, 350 के अंदर है, तो लिया जा सकता है। सेल का वेट भी कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50%। और 50 तो नहीं, बट 30, 20, 30, 30 तक आ सकता है 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। बाकी अभी तक रिव्यू अधिकतर पॉजिटिव हैं, तो रिव्यू जितने ज़्यादा हाई होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, सेल के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एक ही इश्यू मुझे लगा है, वो है मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं उसको चुनने जाता हूँ तो एटलीस्ट उसका मतलब क्या है एग्जैक्ट उस सिनारियो में, वो मैं कई बार कंफ्यूज हो गया हूँ। स्टोरी अच्छी है, अंत में कंफ्यूज कर दी है मुझे। आज थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बाकी गेम भाई आई थिंक 10 में से इजीली 7 तो जाता ही है। इसको 7 से कम तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वॉइस ओवर तगड़ा है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, हर तरीके से चलता सही है। बट वही एक इश्यू जो था ना, उसके कारण 8 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। 9 और 10 वाला कैटेगरी नहीं दूंगा मैं। मिस भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें करने को कुछ नहीं है, एक तरीका का विजुअल गेम है पूरी तरीके से। जिन लोगों ने ये गेम प्ले देख लिया वो अधिक से अधिक इसका दूसरा एंडिंग के लिए देख सकते हैं, बाकी खेल सकते हैं। बाकी तो कुछ रहता नहीं है। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लाइक जरूर करना, एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं हम लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में। बाय बाय, टाटा, गुड डे।